सामने नहीं दिखेगा ना इसमें, सामने दिखने वाला थोड़ा रहता है उससे हटिया। हाँ हाँ कर दीजिए थोड़ा सा, उससे लगता है फील आता है। चलो, हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल डूइंग? सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ अनुभव? अनुभव का अनुभव कैसा रहा? ओके, सो मेनी ऑफ यू अटेम्प्टेड द अनुभव and the standard of the paper, okay, the standard of paper was really good. Questions were kind of difficult also, moderate also, combination of both difficult as well as moderate questions. So I, Manjul Kumar Tiwari, welcome you all, okay, in this अनुभव discussion. तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे दी पेपर विच वॉज हेल्ड लास्ट वीक, लास्ट संडे, एंड आपके जितने भी अनुभव के पेपर होंगे ना, तो डेफिनेटली उसमें डिस्कशन विल बी डूइंग इट, ओके, तो प्रॉपर डिस्कशन होगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, एक्सप्लेनेशन विल इज प्रोवाइडेड ऑलरेडी टू यू, अपार्ट फ्रॉम इट देयर विल बी डिस्कशन ऑल्सो, सो दैट आपकी जो छोटी छोटी क्वेरीज हैं दोस कैन बी हैंडल्ड, ओके. I am good, Binjum. So first question was, what is the potential average weight of all the players across all four sports A, B, C and D collectively, given the below information about the average weight of different combination of sports. So now all of you here, in this case I will give you the hint. देखो, in this case, in this question ना, there is no kind of shortcut. यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है डायरेक्टली दैट यू कैन आंसर. ए बी सी टुगेदर एंड ए सी डी टुगेदर आर 65 kg एंड 75 kg रेस्पेक्टिवली. ए बी डी टुगेदर एंड बी सी डी टुगेदर आर 70 kg एंड 80 kg रेस्पेक्टिवली. सो ऑल ऑफ यू हियर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, डायरेक्टली वी आर गेटिंग दैट इज ए प्लस बी प्लस सी by 3 equals to 65, A plus B plus A plus C plus D by 3 equals to 75. Similarly, A plus B plus D, A plus B plus D by 3 equals to 70, and B plus C plus D by 3, B plus C plus D by 3 equals to 80. So all of you, in this question, such type of questions, what we do, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी सम देम अप. सो हियर व्हेन यू विल सम ऑल दी थ्री ना, जैसे आप a plus b plus c here 65 into 3, a plus c plus d 75 into 3, a plus b plus d will be 70 into 3, b plus c plus d will be 80 into 3. आप सम करेंगे, then directly all of you, what you can find out, you can find out your 3 into a plus b plus c plus d, 3 into a plus b plus c plus d, directly this value you will get, because a plus b plus c भी आपको क्या है, यहाँ पे a b and c, here a c and d, here a b and d and b c and d. So all of you check how many times a is used, 3 times, b is used how many times, 3 times, c is used how many times, 3 times, d is used total how many times, 3 times. So directly आपको sum मिल जाएगा, 3 into a plus b plus c plus d equals to whatever value you get, and then what you have to find out, you have to find out the average ना. तो average क्या होगा आपको, average across all the 4 combinations will be a plus c, a plus b plus c plus d by 4. So now here in this case, the moment you have this value a plus b plus c plus d, आपके पास value आ गई, you divide by 3, you will get a plus b plus c plus d, and then you further divide by 4, you will get the value. So these are simple, ये equation based questions होते हैं जिनमें आप डायरेक्ट क्या कर देते हैं, आप सम कर देते हैं. So you sum them up, you will find कि exactly 3 times a होगा, 3 times b, 3 times c, 3 times d. So this way you can solve it. I hope it is clear to all now. इसमें डायरेक्टली आपको ना एक शॉर्टकट भी है,
पता है ये शॉर्टकट है आपका 65 एंड 75 है यहां पे एवरेज। ओके, बाई चांस यहां पे ये शॉर्टकट कैन बी एप्लीकेबल बिकॉज एकदम नंबर आपको क्या है, ये एग्जैक्टली सेम है, 33333 का ग्रुप है। सो नाउ हियर 65 75, तो एवरेज विल बी व्हाट 70 हियर, 65 एंड 75 का एवरेज क्या हो गया 70 हियर, 70 एंड 80 एवरेज इज व्हाट 75। So finally 70 and 75 their average will be what 72.5. So directly you can find out the shortcut also. So 72.5 ये by chance यहाँ पे हुआ because they are what your equal number of times. Now next question, all of you just read the question here. Given in Rajdhani Express there are 15 bogies which carry on an average of 30 passengers per bogie. If at least 14 passengers were sitting in each bogie and no bogie has equal number of passengers, then what is the maximum number of passengers that can be accommodated in a bogie? तो आप maximum here in this case, अब देखो अब यहाँ पे भी here 15 bogies carry 30 passengers, 15 bogies हैं 30 passengers हैं, so total number of passengers, total number you will get how much? Total number becomes 30 into 15, that is 450. Now you have 450. Okay, आपको 15 bogies हैं, average 30 passengers, so total number of passengers 450 हो गया आपको। अब देखो now these 450 passengers have to be accommodated in what a manner? Minimum 14 passengers in a bogie, and ये क्वेश्चन क्या आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स एक बोगी में आपको अकोमोडेट करने, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स आपके 450 हैं, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स विल रिमेन 450। तो आपको ऑल ऑफ यू नाउ हियर मिनिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ बोगी इज व्हाट 14। नो टू बोगी कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, सो इट मींस नेक्स्ट बोगी आपको मिनिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैव टू बी व्हाट 15, then next bogie minimum number of passengers have to be 16 and so on. Is this clear to all of you? So now here in this manner from 14, अब याद रखना 15 bogies थे तो 14 bogies में 14 bogies, so here in this case directly 14 plus 15 plus 16, how many terms will be there? 14 terms will be there. And is this forming an arithmetic series? ये arithmetic series है क्या? Yes. one term, common difference is what 1, so common difference 1 है, first term is 14, so now here directly you can find out sum up to 14 terms. So sum up to 14 terms, all of you when you find out, so you get how much 287. So sum up to 14 terms you are getting 287. So all of you in the 15th bogie, what is the number of passengers that can be carried? कितने कैरी हो सकते हैं पैसेंजर? 450 minus 287. You find the difference, you get the answer. गार्ड को दे दे। So next question, all of you. The sum of the first 91 terms of an arithmetic progression is 0. Which of the following terms must be 0? Sum of the first 91 terms of an arithmetic progression is 0. आपको sum up to 91 terms ये आपको given है 0 है। Sum up to 91 terms आपको क्या है 0 है। राहुल बियर्ड आ जाएगी, फिर से आ जाएगी। ओके, कभी कभी थोड़ा सा लुक चेंज भी करते रहना चाहिए। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, चलो सही। सो सम अप टू 91 टर्म्स इज 0. So sum up to 91 terms is 0. Now what is the formula for sum up to n terms? Sum up to n terms is given by what? N by 2, 2a plus n minus 1 into d. Sum up to n terms is given by this one.
अब sum of the first 91 terms of an arithmetic progression is 0. So sum up to 91 terms equals to 91 by 2 2a plus 91 minus 1, that is 90 into d. 2a plus 90 into d, and then now all of you can take 2 common from here. अब यहाँ ध्यान देना, 91 by 2 taking 2 common, a plus 45d. 2 and 2 cancel out. Now all of you, 91 into a plus 45d, it is given equal to what? 0. This is given 0. अब देखो 91 is not equal to 0, all of you know. It means definitely a plus 45d equals to what? 0. A plus 45d equals to 0. So all of you, what is a plus 45d? ये a plus 45d आपका क्या होता है? a plus 45d is only your 46th term ना. T46 equals to what? A plus 46 minus 1, that is 45d. So definitely 46th term will be what? 0. So those of you UPSC एस्पिरेंट डियर, ये पेपर आपका ऑलरेडी, जिसने अनुभव पेपर दिया उनके पास ऑलरेडी पेपर है. अदरवाइज क्वेश्चन आपके सामने है डियर, आपको यहाँ पे क्वेश्चन, देयरफॉर आई एम नॉट ओनली काइंड ऑफ डिस्कसिंग द आंसर. क्वेश्चन आपके सामने है, कैन जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन. सो हियर आई विल बी डिस्कसिंग देम. Now next question is, a committee of 6 members is to be formed from a group of 7 men and 5 women. In how many ways can the committee be formed such that it contains more men than women? So it contains more men than women. So अब देखो, committee consists of total 7 men. Total है आपके पास कितने? 7 men and 5 women. Member कितने होने चाहिए? All of you 6 members होने चाहिए. So now all of you, if 6 members such that, अब ध्यान देना, it contains more men than women, number of men must be what? More than women. So if there must be 6 members such that number of men more than women, so how it can be possible? It means the committee can consist of 3 men 3 women हो नहीं सकते. आपको minimum possible number of men has to be what? 4 men and 2 women, और अब याद रखना 4 men and 2 women, और 5 men and 1 woman, or 6 men only, or 6 men. In how many ways can the committee be formed such that it contains more men than women? So all of you now here, 4 men out of 7 men you can select in 7C4. 2 women out of 5 women you can select in 5C2. So 7C4 into 5C2 आपका हो गया. This one becomes 5 men out of 7 men you can select in how many ways? 7C5. 1 woman out of 5 women you can select in 5C1. And then 6 men, all of you, in how many ways can you select 6 men out of 7 men? 7C6. I hope it is clear to all now. So now here in this case, all of you just do the calculation. अब याद रखना यहाँ पे all of you, here we multiply, but यहाँ पे हम plus करते हैं. What is the reason behind it? Why we add here? The reason is, आपको 4 men and 2 women एक साथ हो रहे हैं, 4 men and 2 women, but the committee will consist of 4 men and 2 women, or 5 men and 1 woman, or 6 men. So and में आपस में, now and event you multiply, or event you add. So all of you just you do the calculation, you sum them up. So I think this one you will get 350, this one will be 105, and this one will be 7. So you sum them up, you get 462. Now all of you, next question, find the sum of all 4-digit numbers
by taking all the digits 5, 4, 7, 8. Taking all the digits 5, 4, 7, 8. So here in this question na, sometimes yes, in questions na, if required you use formula or tricks. देखो अब इस केस में ना, इफ यू डायरेक्टली सॉल्व इट ना, अगर आप डायरेक्टली जैसे सॉल्व करने लगो, 4 डिजिट नंबर है, सो सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फाउंड बाय टेकिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ 5, 4, 7 एंड 8. सो नाउ इट मीन्स जितने भी नंबर होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल starting with 5 numbers 5, 4, 7, 8, 5, 7, 4, 8, 5, 8, 7, 4, 5, 8, 4, 7, like this, all the numbers, then starting with 3 and then, so आप ऐसे करके कैलकुलेट करोगे ना, all of you, it will take too much time. It takes too much time because individually now in this case if you start calculating, individually in this case if you start calculating that what will be the sum of the numbers, okay, here what will be sum of the numbers, तो इसमें टाइम लगता है, it will definitely take time. Here logic है कि आपको definitely 8, 8 how many times it will be used, 7, 7, 7 how many times it will be used, 4, 4, 4 how many times it will be used, you can just sum them up. But easier way, all of you just write down the easier way. Now here we can use the direct formula. Now all of you write down the formula that sum of all n digit numbers, sum of all n digit numbers, जितने भी n digit number, जैसे यहाँ पे 4 digit number है ना, sum of all n digit numbers that can be formed using n distinct positive digit integers. n हम अलग अलग different positive integers we are taking, using those integers. So now here how many integers, that formula is given by n minus 1 factorial into 1, 1, 1, 1, how many times, n times, into sum of all the digits, into sum of all the digits, जितने भी digits है ना इनका sum, so into sum of all the digits. देखो एक्चुअली कॉन्सेप्ट कहां से आया, हल्का सा हिंट दे देते हैं, ऑल ऑफ यू, आई जस्ट गिव यू द हिंट. जैसे इफ एनी नंबर इज एक्स वाई, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स वाई, 10x प्लस वाई. अब इंटरचेंज करते हैं डिजिट्स को, ऑल ऑफ यू, इफ वी इंटरचेंज एक्स वाई इट बिकम्स वाई एक्स, सो व्हाट इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, 10y प्लस एक्स. सो देयर सम, if I ask you what will be their sum, so 10x plus y plus 10y plus x, so it becomes what, 11 into x plus y, 11 into x plus y. ऐसे ही आपस में तो आप ये इंटरचेंज करते हैं, यही कॉन्सेप्ट है, फ्रॉम देयर ओनली दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड. सो नाउ ऑल ऑफ यू हियर, सो अभी 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर में ये कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सो n minus 1, so यहाँ पे how many, 4 digit number, so n minus 1 that is 4 minus 1 3 factorial into 111 how many times, n times, that is 4 times, into sum of all the digits, that is 5 plus 4 plus 7 plus 8, 5 plus 4 plus 7 plus 8, so 5 plus 4 plus 7 plus 8. Okay, Sandy will see. Okay, if possible we'll get it, share here in the comment section only. Okay, so directly you sum them up, all of you, finally you get the value, you up calculate करोगे 159984, this value you get. Now this is the common question of syllogism, ये आपका syllogism का general question है. In each question below some statements are given followed by some conclusions. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusions logically follows from the given statement, disregarding commonly known facts. Statements are given, some days are night, all evenings are day, all noons are evening. Conclusions are some nights are day,
all noons are day, some evening are night, all day are noon. देखो ना all of you, अब यहाँ पे याद रखना सिलोजिज्म में ना one of the way through which we solve these questions is your Venn diagram concept. By Venn diagram concept only we solve it. Now in Venn diagram concept na we have to draw two separate type of figures. In one figure we try to keep the variables which are not directly related as far as possible. In other one we try to keep them as close as possible. Okay, we try to keep them close. एक में we try to have common area, in one we try not to have any common area between the variables which are not directly connected. Because what is the simple concept of syllogism? We do not have to try to prove any conclusion correct. We have to just check whether you can prove it wrong. If you cannot prove it wrong, by default it will become correct. Wrong नहीं prove कर पाओगे तो definitely correct हुआ नहीं हुआ. यही concept है syllogism का. अब यहाँ पे भी एक logic देखो. Now here in this case statements are given immediately. Look at the conclusion. Time भी तो save करना है ना. Some nights are day, all noon are day, some evening are night, all day are noon. अब ये आपके conclusions हैं. तो ना all of you, अब इन conclusions में सिर्फ some या all है. To prove some and all wrong. अब याद रखना, to prove some and all wrong, just draw one figure where the unknown variables you keep them as far as possible. दूर दूर करो अपने आप ही. In that figure, if you can prove any conclusion wrong, then it will be wrong, or else it will be correct. तो अब यहाँ पे no need to draw. Okay, so many figures. So statement है some days are night, so small figures only we are drawing. Some days are night, days है ये night है. All evening are days, all evening are days, all evening, ये all evening are days, because evening will be within days only. All noon are evening, all noon are evening, then all noon. So this is noon, this is evening, this is day, this is night. Okay, remember. See, we try not to have any common area. Okay, as much जितना try कर सकते थे किया है. Now here in this case, statements है, using these three statements we have drawn just one figure. First has some nights are day. Now all of you, if some days are night now, then some nights are day, definitely it will be a valid conclusion. If some A are B, some B are C, sorry, some A are B, then definitely some B are A is what? Valid. तो ये आपका हमेशा वैलिड होगा. ये तो बड़ा ही सिंपल इजी था. सेकेंड, ऑल नून आर डे. अब देखो, इवनिंग विल बी डेफिनेटली विद इन डे एंड नून विल बी ऑलवेज विद इन इवनिंग. सो इफ evening is within day, noon is within evening, then definitely noon will be what? Within day. So आपको second, all noon are day, definitely it will follow. Next, some evening are night. Evening यहाँ पे है, night यहाँ पे है. So evening and night, is there any common area? No. So third is wrong. All day are noon. Now this day is large, noon is small. So all day are noon? No, it is not correct. Okay. So all of you here, fourth one also wrong. So first and second. So याद रखना, justify नहीं करना है, just you have to see whether you can prove it correct or not. So Ansuman, I hope it is getting clear. Now find the difference between the number of words formed from voice when all vowels are together and words formed from English when all vowels are not together. पहले question, read the question, okay, slowly. Find the difference between the number of words from voice when all the vowels are together. Any voice में all the vowels are together, how many words are formed? And from English when all vowels are not together. Now in English how many words are formed? Okay, where vowels are not together.
अब देखो यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट हियर, दैट इन दिस केस ऑल ऑफ यू व्हाट वी डू, वॉइस में VOICE वॉइस, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर, OIE 3 वॉवेल्स आर देयर. So 3 vowels, अब क्या करते हैं, 3 vowels we club them together, so we take them OIE because vowels are together, and then V and C. So it becomes 1 2 3 separate entities. So these 3 can be arranged in how many ways, 3 factorial. And then OIE, now among themselves can they be arranged or not, आपस में तो arrange कर ही सकते हो ना. So OIE among themselves can be arranged in how many ways, 3 factorial. So 3 factorial into 3 factorial, this will be the total number of words using the letters of the word voice such that all vowels are together. Okay, now all of you just do the calculation from your end. Calculation practice is important. Okay, so just keep doing the calculation. And then English when all vowels are not together. अब देखो all vowels are not together find out करने के लिए easy क्या है, you find out total number of words which can be formed from English, and then what you do, अब क्या करना है, from it you subtract all those words where vowels are together, you subtract all those words where vowels are together. Is it clear? तो बाकी में vowels will be not together. So now here English, so how many, 1 2 3 4 5 6 7, how many letters are there, 7 distinct letters. So total number of words can be formed, it will be what, 7 factorial. Total number of words which can be formed is 7 factorial. Second, vowels together. Now all of you, अब यहाँ पे तो vowels सिर्फ E and I है ना, these are the 2 vowels only. So E and I together, then N G L S H. So ये कितने बन, 1 2 3 4 5 6. So how many words will be there in which all the vowels will be together? So here 6 factorial, EI they can be interchanged in how many ways, 2 factorial into 2 factorial. So all of you 7 factorial total number of words. In these words आपको क्या होंगे, vowels will be together. So आप इसको subtract कर दो. Now you subtract whatever value you get, from that you subtract this one. So that difference overall it will be the answer. I hope it is clear to all of you now. So ये आपका 3 factorial 6 into 6 36 आ गया, and this 7 factorial आपका है 720 into 7 5040, and this 6 factorial 720 into 2 1440. So this difference will be 3600, and then 3600 minus 36 3564. Okay. मोनिका सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, वॉइस में जितने लेटर्स हैं तो वॉवेल्स टुगेदर, सो वॉवेल्स टुगेदर OIE देन VC. सो यू सी हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं इन विच वॉवेल्स आर टुगेदर. यहाँ पे नाउ इंग्लिश में टोटल हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, सो इंग्लिश में टोटल 7 लेटर्स हैं तो 7 फैक्टोरियल. अब इसमें कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें वॉवेल्स टुगेदर होंगे, सो वॉवेल्स यहाँ पे EI है तो वही सेम कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. दीज वर्ड्स वॉवेल्स विल बी टुगेदर, सो सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमेनिंग वर्ड्स में क्या होंगे, वॉवेल्स विल बी नॉट टुगेदर. सो ये आ गया आपका, एंड देन दिस वन, फाइंड द डिफरेंस, इनके बीच डिफरेंस. देखो डियर, दैट कैन बी इम्प्रूव्ड ओनली विथ प्रैक्टिस, दैट कैन बी इम्प्रूव्ड ओनली विथ प्रैक्टिस, विथ रिगरस रीडिंग. यू स्टार्ट रीडिंग, बिल्डिंग वोकैब, वोकैब अपना बिल्डअप करना स्टार्ट कर दो, एज वेल एज यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग.
नाउ हियर ऑल ऑफ यू, आई विल जस्ट गिव यू द हिंट, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस टेस्ट का। यहाँ पे चैलेंज है ओनली काइंड ऑफ नहीं होता डीकोडिफाई, बस डीकोडिफाई करना यहाँ चैलेंज है, अदरवाइज क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। हमेशा याद रखना क्वेश्चन यहाँ डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे चैलेंज है सिर्फ डीकोडिफाई करना। ऑल ऑफ यू कि इन व्हाट मैनर, देखो डियर एक चीज याद रखो, क्लास में भी आई ऑलवेज टेल, ओपन सेशंस में भी जितने भी सेशंस होते हैं, अपना नाम लिख दिया करो डियर। आप लोग योर नेबर करके, आप लोगों का यूजर नेम इंटरेस्टिंग रहता है, ऐसे इंटरेस्टिंग नेम के साथ आप लोग कमेंट करते हो, सब अपना नाम लिख दिया करो ताकि इजी रहे। ओके, सो नाउ हियर इन दिस केस देखो डियर, वन थिंग रिमेंबर कि आप स्टार्टिंग में ही ना आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो कि मैथ्स वीक है तो लीव मैथ्स, रिलाई ओनली ऑन रीजनिंग एंड इंग्लिश, क्योंकि अभी तो आप रिलाई कर रहे हो इंग्लिश एंड रीजनिंग पे, बट अगर एग्जाम में इंग्लिश से टफ आ गया, आपने मैथ्स पहले ही लीव कर रखा है, इंग्लिश में डिफिकल्ट आ गया तो इट विल बिकम टू डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो इसलिए देखो टारगेट ये रखो कि हाँ ट्राई टू कवर ईच टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक, एलसीएम, एचसीएफ, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, अर्थमेटिक, एवरेज, परसेंट रेशियो, प्रोपोर्शन एंड ऑल, ये डेफिनेटली क्लियर होने ही चाहिए। आपको अगर ये टॉपिक्स भी क्लियर होंगे, नंबर सिस्टम में डिवीजन वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत हेल्प करेगा। देखो आई एम नॉट आस्किंग कि अगर मैथ्स से 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना तो आप 30 के 30 कर लो, एटलीस्ट एंश्योर करो कि कम से कम 8 to 10 क्वेश्चंस ही कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो। फ्रॉम नाउ यू हैव मोर देन इनफ टाइम, आपके पास काफी टाइम है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, एंड देन डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूं कि 30 में से आप 8 कर लो, 10 कर लो, दैट विल ऑल्सो गिव यू एन एडवांटेज ना, बिकॉज आपका रीजनिंग इंग्लिश डिफिकल्ट आया तो आप फंस जाओगे। आपको लगता है डिफिकल्ट, प्रॉपर ज्वाइन सम कोर्स, नहीं होता अपना कोर्स ज्वाइन करो, कवर करो सिलेबस, लाइटली मत लो सीसैट को। जीएस में आप इतना एफर्ट कर रहे हो, सीसैट में एफर्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग में ही आप सोचने लगते हो कि नहीं लीव करते हैं, ये टॉपिक लीव करते हैं, ये एरिया लीव करते हैं, नहीं ये गलत है, ये बड़ा ही रॉन्ग, आपको कहते हैं ना, आपको मिसकंसेप्शन मार्केट में है, बहुत ही गलत है ये पहले चलता था अब नहीं चलता है, क्योंकि आउट ऑफ 3 क्वांट, रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी, अगर कोई भी एक सेक्शन अगर डिफिकल्ट हो गया और आपने दूसरा सेक्शन पहले ही छोड़ रखा तो इट विल बिकम टू डिफिकल्ट फॉर यू। तो इसलिए टारगेट करो कि कम से कम 5-7 क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस तो हो जाए। तो इसलिए तो ऐसे जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट टू काइंड ऑफ ज्वाइन, नहीं होता कि आपको लगता है कि हाँ यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, सीसैट कोर्स ज्वाइन करना है, तो R1 बैच इज स्टार्टिंग ऑन 5th of Feb, तो 5th of Feb से आपके सीसैट फाउंडेशन कोर्स इज स्टार्टिंग, so definitely you can join that CSAT course, आपका CSAT कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। so within 2 months the course will be completed, 2 महीने के अंदर आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। so 2 months और मैक्सिमम 2 months 1 week it will take, कोर्स विल बी कंप्लीटेड। उसके बाद आपको साथ में टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगे, तो इट विल हेल्प यू। सो रिगार्डिंग दैट आपके नंबर्स वगैरह रहते हैं, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग द कोर्स। नाउ ऑल ऑफ यू हियर कोडिफाई करना M3 and N. M3 and N means M is 5 meter to the east of N. अब यहां पे all of you please understand, I'll just give you the hint and then to solve it. And means to the east of N. अब starting में when you look at ना M3, M4, M6, M8, तो लगता है क्या है ऐसे, not that important, but when you continuously see M3, M4, M6 and accordingly number, M3 and N means M is 5 meter to the east of N. M4 star N means M is 6 meter to the west of N. M6 plus N denotes M is 8 meter to the south of N.
m8% n denotes m is 10 meter to the north of n. So now here in this case, अब आपके पास the moment you have such problems ना, so आप क्या करते हो in this case, what we find here, यहां देखो 3 है तो distance is 5, 4 distance is 6, 6 then distance here is 8, 8 then distance here is 10. It means all of you remember and percent plus and percent sign and star plus and percent sign, ये आपको डिनोट कर रहे हैं डायरेक्शन. एंड 3 4 6 8 ये क्या आपको डिनोट कर रहे हैं? नाउ ऑल ऑफ यू दीज आर डिनोटिंग योर डिस्टेंस. ये डिस्टेंस डिनोट कर रहे हैं कि अगर 3 है तो यानी कि डिस्टेंस क्या होगा? 5 किलोमीटर. So now here जैसे f7% g, so percent means what? f is to the north of g, तो अगर g यहां पे है तो f is to the north of g. अब 7 है यहां पे तो all of you 7 means how much? 9 meter. Is it clear? The moment आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट these questions will become easy. ये क्वेश्चंस आपको इजी हो जाएंगे. पीयूष आई विल गिव माई, आप ऐसा कर लो टेलीग्राम आईडी ले लो, मंजुल 11 CSAT, मंजुल 11 CSAT टेलीग्राम आईडी है. आपको कोई क्वेरी होगी ना, कभी आपको क्वेश्चन रिलेटेड अगर जैसे क्वेरी लगती है, आपको कोई भी क्वेरी है ओके CSAT रिलेटेड, आप इस पे डायरेक्टली मैसेज कर देना. ओके एज वेल एज फॉर मोर प्रैक्टिस सम्स, ओके मोर प्रैक्टिस सम्स you can join Maths Magic by मंजुल. ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पे भी आप कमेंट वगैरह में अपने नहीं होता है, जैसे यहां पे डायरेक्टली ऐसे तो मैसेजेस आपको रेस्ट्रिक्टेड है, बट कमेंट में आपको जैसे क्वेश्चंस है क्वेरीज हैं आप उसमें डाल सकते हो. डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे से, कोई आप एकदम निश्चिंत रहो. यहां पे CSAT में नेक्स्ट IAS में वी गिव काइंड ऑफ नहीं होता कि आपको कनेक्ट है तो आपको कोई भी क्वेरी है डायरेक्टली आप कनेक्ट कर लो मेरे से ही आपको क्वेश्चंस में. देन सिमिलरली ऑल ऑफ यू E 2% G C means what? E will be what? E will be 4 meter to the north of C. So I'm just giving you all hint. आप अपने से अब इसको क्लब कर लेना, सॉल्व कर लेना, because it becomes very easy once you decodify it. B1 star A. B1 star A means what? B will be 3 meter to the west of A. So अगर A यहाँ पे है तो B will be 3 meter to the west of A. H2 and F. And means east. So H is to the east of F. So H is to the east of F. तो यहां पे H F के कितना ईस्ट में? 2 means 4 meter. C8 star G. C8 star G means C is to the west of G. How much west of G? G के 10 meter west. Because 8 है तो ये 10 meter हो जाएगा. D4 and E. D4 and E. D4 and means what? D is to the east of E. D is to the east of E. Then 4 means D is 6 meter to the east of E. D is 6 meter to the east of E. And D3 plus A. D3 plus A means D is 5 meter to the south of A. So D is 5 meter to the south of A. D आपको A के 5 meter south में. So now all of you can club them up. G, C, E, D यहाँ पे है. So with respect to G, F and H you can club, and D, A and B you can club, and then you can answer any question. आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो. I hope it is clear now. Question number 18.
नहीं डियर, देखो हमेशा याद रखना, कोडेड इनइक्वालिटी में राहुल, इन केस ऑफ कोडेड इनइक्वालिटी या फिर बाकी जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें इट्स नॉट नेसेसरी दैट द सेम वेरिएबल, आपको ए बी एंड ए बी में रिलेशन गिवन है, यहाँ पे पी क्यू में इट कैन बी आस्क्ड, एक्स वाई में रिलेशन गिवन है, ए बी में इट कैन बी आस्क्ड। देखो व्हाट मैटर्स हियर इज द सिंबल इन बिटवीन, व्हाट द सिंबल सिग्निफाइज। इज इट क्लियर? तो ये माइंड में अपना क्लियर रख लो कि सिंबल से ना रिलेशन क्लियर होता है कि क्या रिलेशन है। Now next question, question number 18, how many times does the digit 5 appear in the numbers from 9 to 1000? देखो I always want to kind of give 100% support, but हाँ एक चीज और है कि I am totally against spoon feeding। आप लोग याद रखो, कैलकुलेशन प्रैक्टिस, I always ask you all कि खुद से कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, do the calculations on your own, वो कॉपी मत करो, ईच एंड एवरीथिंग कॉपी मत करो, वरना ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड बिल्डअप नहीं हो पाएगा, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे ना, लर्निंग नहीं आएगी। देखो लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना कि स्पून फीडिंग मत करना। कहीं भी आप क्वेश्चंस अगर होगा ना कि सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं आप, एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, रट रहे, उससे फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन अंडरस्टैंड देन अटेम्प्ट। Now here how many times does the digit 5 appear in the numbers from 9 to 1000? अभी 9 to 1000 है ना, तो सिंपल एक here what we will do 1 to 1000 में फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, अपने आप में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड आउट एग्जैक्ट आंसर। नाउ ऑल ऑफ यू 1 to 1000 इफ यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम द डिजिट 5 अपीयर्स, डिजिट 5 कितनी बार अपीयर होता है। ओके, सो नाउ हियर how many times digit 5 appear, so 1000 में it is not appearing any time, so 1000 you leave it, 1000 में तो ये appear कर नहीं रहा है, तो आपको 999 तक जितने भी 3 डिजिट नंबर्स हैं, मोनिका आई होप इट इज गेटिंग क्लियर नाउ। सो 1 to 999, क्योंकि देखो 1000 4 डिजिट नंबर था, उसमें 5 है नहीं आपको, तो जस्ट 1 to 999 इफ वी आर कंसिडरिंग। अब हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 5 कैन बी यूज्ड, अब 1 से लेके 9 तक ना ऑल द नंबर्स आर सिंगल डिजिट नंबर्स, 10 to 99 all the digits are 2 digit numbers, and 100 to 999 all the numbers are 3 digit numbers। अब देखो इस केस में ना नंबर या तो सिंगल डिजिट है, या फिर डबल डिजिट है, या फिर ट्रिपल डिजिट नंबर्स हैं। सो नाउ डिजिट 5 कैन अपीयर, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ईदर एट द यूनिट डिजिट प्लेस, यूनिट यानी कि लास्ट डिजिट प्लेस पे, या तो डिजिट आपका 10th डिजिट प्लेस पे आ सकता है, या फिर 100th पे। ऑल ऑफ यू प्लीज डेवलप दिस अप्रोच, ये बेस्ट अप्रोच है, इसमें ना कंफ्यूजन होगा और ना रिपीटिशन होगा, ना कंफ्यूजन होगा, नॉट यू विल लीव एनीथिंग। सो एनी डिजिट कैन अपीयर ईदर एट यूनिट डिजिट प्लेस, 10th डिजिट प्लेस, या 100th डिजिट प्लेस। अब यूनिट डिजिट प्लेस में आप क्लब कर लो, ग्रुप। इफ सपोज आई टेक द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, सो 1 to 100 में digit 5 is used, digit 5 is used at unit digit place in what all numbers, किस किस नंबर में आपको 5 यूनिट डिजिट प्लेस पे यूज हुआ है, 5 में, देन 15, 5 अपने आप में सिंगल डिजिट नंबर है तो यूनिट डिजिट भी यही है, 15, 25, 35 लाइक दिस टिल 95। सो कितने नंबर्स हैं आपको, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हाउ मेनी नंबर्स, 10 नंबर्स। सो ये 10 नंबर्स हैं विच विल हैव 5 एट यूनिट डिजिट प्लेस, सो हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स। तो ये आपका 10 टाइम्स आ गया। सो 1 to 100 10 टाइम्स है ना, अब ध्यान देना। सो 100 1 to 200 यूनिट डिजिट प्लेस पे, दैट विल बी ऑल्सो 10 टाइम्स, 105, 115, 125 टिल 195। ऐसे ही 201 से 300 तक, दे आर ऑल्सो हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स, 205, 215, 225, 235 लाइक दिस।
क्लियर? सो नाउ व्हाट वी फाइंड कि हर एक 100 इन ईच सेट ऑफ 100 नंबर्स digit 5 is used at unit digit place. How many times? 10 times. तो अब कितने ग्रुप बन रहे हैं? 1 to 100 1 group, 100 to 200, 200 to 300, like this till 901 to 999 या फिर 1000 you say. So how many group you will form? Total 10 groups होंगे ना, 100 into 10 है 1000. So how many groups will be formed? 10 groups. So how many times it is used? 10 into 10, 100 times. कितनी बार? 100 टाइम्स. नाउ अब टेंस डिजिट प्लेस पे, टेंस डिजिट प्लेस पे इन व्हाट ऑल नंबर्स यू विल हैव. तो अब टेंस डिजिट प्लेस पे किस किस नंबर में होगा? ऑल ऑफ यू अब ध्यान देना. 50, 51, 52 अप टू 59, 50 to 59, ऑल दीज नंबर्स दे विल हैव 5 एट टेंस डिजिट प्लेस. टेंस डिजिट प्लेस पे 5 आया, तो आपको जैसे ही टेंस डिजिट प्लेस पे 5 आया, सो कितने नंबर्स हैं? सो 50 से 59 ऑल ऑफ यू 10 नंबर्स होते हैं. कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट एग्जैक्टली 10 नंबर्स. अब सिमिलरली 150 टू 159 दे विल हैव 5 एट टेंस डिजिट प्लेस, 250 टू 259 इन दिस मैनर. सो ऑल ऑफ यू इन ईच 100 numbers we are getting how many times? 10 times. And 100, how many groups are there? 10 groups. So tens digit place पे, so this is unit digit place, this is tens digit place. So tens digit place पे भी 10 into 10 100 times. And 100th digit place पे what all numbers? 100th digit place पे from 500 to 599, all these numbers they will have 5 at 100th digit place. So 100th digit place, how many times? 500 to 599, how many numbers are there? 100 numbers, so 100 times. So total आपका क्या हो गया? 300 times. अब देखो, अब सेम लॉजिक अप्लाई करेगा ना, सेम लॉजिक विल अप्लाई फॉर एनी डिजिट. 5 के लिए अप्लीकेबल है, सेम 6 के लिए भी, 3 के लिए, 4 के लिए, 7 के लिए, फॉर ईच डिजिट सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल. अब यहाँ क्वेश्चन था 9 to 1000, सो अब 9 to 1000 था ना, तो उसमें से बस एक केस, टोटल 300 टाइम्स. सो 1 to 9, 1 to 9 5 is used only once ना, तो from 300 you subtract that one case of 5, how many times? 299 times. 299 times. I hope it is clear now. So answer will become 299 times. Now all of you, ये क्वेश्चन आपको सिंपल साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट है. सिंपल साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट, यू फाइंड आउट यूनिट डिजिट इन ईच केस. हर एक जगह पे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो एंड देन मल्टीप्लाई. देखो 741 टू द पावर 471, हियर यूनिट डिजिट विल बी ऑलवेज 1. 741 into 741 into 741, ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 ही आएगा, because it will be 1 into 1 into 1. Remember, unit digit of the product is always equal to product of the unit digit. तो 1 into 1 into 1 करते जाओ, हमेशा unit digit क्या आएगा? 1. So here always unit digit is 1. यहाँ पे unit digit is what? Always 5. अब I will give you the shortcut also here. यहाँ पे आपको shortcut भी देंगे. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है ना, तो all of you remember 925 into 925 into 925, it means 5 into 5 into 5. अब 5 into 5 into 5 करते रहो ना, हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा. 5 into 5 25, again into 5, always unit digit is 5. So here unit digit will be 5, यहाँ पे unit digit 5. Here unit digit, अब 4 के केस में 7834 to the power 1793, तब यहाँ पे 4 to the power kind of 1793. सो 4 के केस में साइक्लिसिटी 2 है. 4 के केस में यूनिट डिजिट ईदर विल बी 4 और 6. जब पावर ऑड होता है यूनिट डिजिट इज 4, पावर इवन यूनिट डिजिट इज 6. सो यहां पे डेफिनेटली यूनिट डिजिट, यहां पावर क्या है? ऑड नंबर है ना, 1793 इज ऑड नंबर, हियर पावर विल बी इज ऑड, सो यूनिट डिजिट विल बी व्हाट? 4. यहां 4, यहां 5, सो यूनिट डिजिट 4 into 5 into 1,
So 4 into 5, 20, that is 0. Unit digit will be 0. अब देखो now all of you, अब इस केस में डायरेक्ट शॉर्टकट क्या था, द मोमेंट यू हैव 5 हियर ना, जैसे ही यहाँ पे 5 है तो ये पता है कि 5 का पावर एनीथिंग, यूनिट डिजिट विल बी ऑलवेज 5. एंड द मोमेंट यू फाइंड 4 हियर, 4 इज इवन नंबर, तो इवन नंबर you keep on multiplying with itself, unit digit will be always even number. Or 5, the moment it is multiplied with an even number, you get unit digit as 0. 5 जैसे ही मल्टीप्लाई होता है ना, यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाता है, 0. सो डायरेक्टली यहां पे तो देखते ही यू कैन मार्क आंसर 0. All of you, this is simple calculation question. कभी कभी आपको simple calculation question is also given just to check. और एग्जाम में भी ये मत सोचना कि नहीं आ सकते हैं. You can get, okay, there they have asked यानी pure calculation based questions also in exam. So this one you apply the BODMAS rule, bracket of division, multiplication, addition, subtraction, and then you can solve it to get the answer. Now question number 25, study the question along with the statements and decide the information given in which of the statement is necessary to answer the question. The present age of Ayu's brother is twice that of Ayu's. Okay. After 6 years, the ratio of ages of Ayu's and his brother is 7:8. Third, Ayu's is younger to his sister by 6 years. Question, what is the present age of Ayush? अब देखो, अब यहाँ पे ना, here in this case no need to even check. अब ये data sufficiency concept है. Here what you don't have to find out the exact answer, you have to see whether the data is sufficient enough to answer the question or not. अब जब ऑप्शन में ही combination of statements given ना, now in option only combination of statements given, तो no need to even kind of check individually. ये clear है कि individually these are not sufficient. Now all of you अब direct अपना concept apply करो. First one अकेले sufficient नहीं हुआ age find out करने. Second one is also not sufficient. Third one also alone not sufficient. Now here first and second if we combine, प्रेजेंट एज ऑफ आयुष ब्रदर इज ट्वाइस दैट ऑफ आयुष, यानी आयुष की एज अभी x है तो आयुष ब्रदर एज इज 2x. 6 years, द एज ऑफ आयुष एंड हिज ब्रदर इज 7:8. 6 years later his age will be what, x plus 6, his age is 2x plus 6, and this ratio is given x plus 6 upon 2x plus 6 equals to 7:8. Now all of you, can't you solve it to find the value of x? So yes, first and second statement together will be sufficient to find the age of Ayush. ये sufficient है, first and second together sufficient. देखो third is irrelevant ना, sister says, because first में भी और second में भी nowhere sister is mentioned, therefore third is not required. So option A, first and second together sufficient. Now number of diagonals of a regular polygon is 4 times the number of its sides. How many sides does it have? देखो, now all of you just remember कि here the number of diagonals in any polygon, n-sided polygon, is always given by regular polygon. Regular means all sides are equal. NC2 minus n. Number of diagonals in any polygon is given by NC2 minus n. Number of diagonals is 4 times the number of its sides. तो अगर n sides हैं तो आपको NC2 का short क्या होता है? All of you remember, NC2 short form is n into n minus 1 by 2. So n into n minus 1 by 2 minus n, this value is given equal to what? 4n.
number of diagonals n into n minus 1 by 2 minus n, this is the number of diagonals equals to 4 times the number of sides. So solve कर लेना, n into n minus 1 equals to 4n plus 5n, 10 आ गया, 10n. Now you just solve it. All of you solve it, you can get the answer. अब देखो कभी भी कंफ्यूजन होना तो ऑल ऑफ यू वन ऑफ द बेस्ट वे इस क्या है कि ऑप्शंस के थ्रू ट्राई कर लो. ये इक्वेशन सॉल्व करने में कंफ्यूजन होगा तो कभी ऑप्शंस के थ्रू ट्राई कर लेना. NC2 इफ ऑप्शन ए तो 11 into 10 by 2, so 11 into 10 by 2 that is 11 into 5. NC2 minus n, 11 into 5 55 minus 11 44. And all of you tell me अगर 11 sides है then given number of polygon is 4 times the number of its sides. So 11 into 4 is what? 44. यहाँ भी 44. Yes, 44 44 मैच कर रहा है. Directly you mark it as the answer. Directly you mark it as the answer. तो देखो कभी भी कई बार नहीं होता आपको इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम है ना, देयर ऑलवेज ट्राई थ्रू दी ऑप्शंस. ऑप्शंस के थ्रू ट्राई कर लो. जहां पे आपको लगता है कि इक्वेशन बनेगा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो ट्राई थ्रू दी ऑप्शंस. प्लीज डेवलप दिस हैबिट. बट रिमेंबर आपको एक चीज हमेशा माइंड में फिक्स रखनी है, योर कैलकुलेशन स्पीड मस्ट बी अबव एवरेज. कैलकुलेशन स्पीड आपकी अबव एवरेज रहनी चाहिए. नाउ here question number 27, all of you just look at question number 27. Given a fruit seller with a given amount can buy either 20 apples or 12 oranges or 5 watermelons. Find the number of oranges he can buy with 10 times the initial amount such that he gets each of the 3 varieties of fruits. देखो now here in this case given amount can buy, so suppose here in this case total amount suppose आपका क्या है, total amount is rupees x, total amount is rupees x. So if total amount is rupees x, then in x rupees he can buy how many apples? 20 apples. So x by 20 will be the cost of each apple. He can buy how many oranges? 12 oranges. So x by 12 will be the cost of each orange. Or he can buy 5 watermelons. So x by 5 is the cost of each watermelon. Okay, clear hai? This is the cost of each watermelon, this is the cost of each orange, this is the cost of each apple. Find the maximum number of oranges he can buy with 10 times the initial amount. अब amount आपके पास क्या आ गया? 10x. Total amount आपके पास आ गया 10x. Now all of you अब ध्यान से देखना, 10x is the total amount you have, such that he gets each of the 3 varieties of fruits. Oranges, number of oranges maximum होने हैं, number of oranges have to be maximum. Now here in this case number of oranges have to be maximum, then all of you number of apple and watermelon has to be what? Least. यानी आप क्या कर सकते हो, just 1 1 you can take. So you can take 1 1. तो अब you can take 1 1. So 10x में से you just subtract cost of each one apple, cost of one watermelon, whatever sum you will be getting, जितना पैसा बचेगा, you divide it by cost of each watermelon, sorry, cost of each orange. Divide by cost of each orange. This will be the sum remaining. Divide by cost of each orange. Those many oranges he can purchase. Now all of you, अब यहाँ पे एक important point है, calculation technique है actually. ठीक, calculation technique क्या है ना कि sometimes x को avoid भी करना चाहिए. Okay, हमेशा x जरूरी नहीं है. So now here in this case
20 apples or 12 oranges or 5 watermelon now. So instead of taking the total amount as X, you can take the total amount as LCM of 20, 12 and 5. So 20, 12 and 5. So 20, 12 and 5 LCM will be what? 240. So 240 आपको LCM है. So suppose initial amount 240 है. So अब 240 rupees में you can buy 20 apples. So what will be the cost of each apple? 240 by 20, that is 12. 12 oranges. The cost of each orange will be what? 240 upon 12, that is 20. And cost of each watermelon. एक watermelon का cost क्या होगा? 240 upon 5, that is 48. Clear? अब next time आपके पास 10 times amount है. तो amount आपके पास कितना है? 2400. Maximum how many oranges you can buy? And you have to buy all the 3 varieties of fruits. So now all of you here in this case आप subtract कर दो minus cost of apple minus cost of orange. So अब आपको 2340 and then you divide it by the cost of orange. So अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कितना सिंपल हो गया. 117 हो गया कि नहीं? सिंपल कैलकुलेशन. हाउ मेनी यू कैन बाई? 117. तो इसमें कैलकुलेशन हमेशा क्या होता नहीं, ये एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि अब कैलकुलेशन इसमें ऑलवेज, ऑल ऑफ यू रिमेंबर, कैलकुलेशन आपका नेचुरल नंबर में ही रहेगा. तो आपका कैलकुलेशन नेचुरल नंबर में देखो कितना इजी कैलकुलेशन हुआ, क्योंकि एग्जाम में आपका प्रेशर बहुत रहेगा. आप यू ऑलवेज वांट कि कैलकुलेशन आपका क्या हो? सिंपल हो. समझ रहे? देखिए यहां पे कितना इजी कैलकुलेशन. सो ऑल ऑफ यू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर गेटिंग अलॉट. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डेवलप करो ये अप्रोच, इंपॉर्टेंट है. Now here in this case, all of you, family of 8 members are given A, B, C, D, E, F, G, H. One day they sit around a circular table for dinner. There are 3 married couples in the family of 3 generations, each third to the right of B and exactly 2 persons sit between G and D. C is to the right of his grandson. F is the son-in-law of D and his daughter is A, who sits to the immediate left of her aunt E, who is opposite to D. G and D are sisters-in-law and they belong to second generation. H is unmarried while F has no siblings. Each couple has at least 1 child. देखो now all of you here in this case ना, अब देखना यहाँ इस केस में इजी क्या है, आपको डायरेक्ट हिंट देते हैं. इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कंप्लीटिंग द अरेंजमेंट ना, 8 पर्सन है, 3 फैमिली जनरेशंस है, 3 जनरेशंस है. सो 8 पर्सन एंड 3 जनरेशंस. राहुल ये कैलकुलेशन यही प्रैक्टिस करने के बाद, इसलिए तो डियर यही तो रोल है टेस्ट का, मॉक टेस्ट का. इसलिए तो मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सम्स करते हैं. जब मॉक टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिस सम करते हैं, तभी तो आइडिया लगता है. इसीलिए तो ये एक्सप्लेनेशन जो है, आई एम गिविंग दिस एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए तो मैं डायरेक्टली दे रहा हूं कि आपको पता चले कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे. यही तो पर्पस है इसका. अदरवाइज पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन तो मिल ही जाता. तो ये मेथड अच्छा लगा ना, तो इस मेथड को प्रैक्टिस करो जम के. तो अब देखो यहाँ पे 8 पर्सन है टोटल, ऑल ऑफ यू, और 3 जनरेशन है. तब याद रखना हमेशा देयर विल बी 3 जनरेशंस ओनली टोटल. 8 पर्सन्स विल बी डिवाइडेड अमंग दीज 3 जनरेशंस. 3 आपको पेयर है यहाँ पे, 3 मैरिड कपल्स हैं, यानी कि 3 पेयर्स हैं यहाँ पे. C is to the right of his grandson. C is to the right of his grandson, यानी कि डेफिनेटली C आपका फर्स्ट जनरेशन में आएगा, क्योंकि 3 जनरेशन में है तो C is right of the grandson, so C डेफिनेटली आपका फर्स्ट जनरेशन में है. सेकेंड, F is son in law of D and his daughter is A. अब देखो
F is son-in-law of D, F is son-in-law of D and his daughter is A daughter है, तो देखो मेल वी रिप्रेजेंट बाय स्क्वायर बॉक्सेस, फीमेल वी रिप्रेजेंट बाय सर्किल, मेल वी रिप्रेजेंट बाय स्क्वायर बॉक्सेस, फीमेल वी रिप्रेजेंट बाय सर्किल। तो अब A यहां पे आ गए, अब देखो D यहां पे है, डेफिनेटली वी नो, तो अब ये 3 जनरेशंस क्लियर हो गए। सो नाउ वन थिंग इज क्लियर मोर, दैट C will be also in this first generation only, okay? And who sits to the immediate left of her aunt E? A is sitting to the immediate left of her aunt E, यानी कि E आपको E is there in this generation. Who is opposite D? G and E are sisters in law. अब G and E are sisters in law, तो E अगर यहां पे है and sisters in law हैं, then definitely G will be the other female here. G and E are sisters in law, okay, and they belong to second generation given. H is unmarried while F has no siblings. अब F has no siblings, F के और कोई sibling नहीं है, and H is unmarried, it means definitely H will be here in this generation. And who is the only person remaining now? B is the only person remaining. B and E will become the another. So now all of you here, it is clear now. Each couple has at least one child, it means definitely H is the child of this another couple, and C and D one couple, B, E, G, F now another couple. So I hope it is clear to all now. So now in this case, the moment it is clear, now you can complete the circular arrangement also. देखो family tree clear है, तो circular arrangement also you can complete now easily. I hope it is getting clear now. So now you can complete H, E, A, F, B, and then who are the 3 persons remaining now? D, G and C. D, G and C. So I hope it is clear now. So now all of you can answer the questions based on it. Now in this question, all of you have to find out the next term. So now here they are moving in the clockwise manner. E, F, G, H. So F है, E है, H है, G है. So after F, E, F, G, H, I, J. So next one will be what? K, L. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबसे सिंपल क्या है? E, F है, G, H है, I, J है, तो नेक्स्ट वन विल बी K, L ओनली. 2 टर्म्स आपके KL ही होंगे. Now the moment KL, so now here in this case just see how they are shifted. Now F है G, then I and J. So now in this case definitely where will be shifted? Now K and L, only option remaining is here. K and L, they will be shifted in this manner only. देखो ध्यान से देखो, अगर कंफ्यूजन हो रहा ना तो यहां से ध्यान देखना.
ई एफ में ई फर्स्ट है, जी एच में जी फर्स्ट है, आई जे में आई फर्स्ट है, तो ई यहां से यहां पे आया, मींस ई यहां पे था तो अब फर्स्ट लेटर जी आपको शिफ्ट होके यहां पे आ गया, देन जी से आई शिफ्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, आई यहां पे आ गया। तो अब नेक्स्ट टाइम आई जे है तो के एल, तो अब के क्या होगा, वेयर विल बी के विल बी आई से आप यहां पे शिफ्ट करो, सो के विल बी हियर, के विल बी हियर पोजीशन। देखो कोई भी एक चीज पे कर लो अपने आप ही क्लैरिटी आ जाएगी। Now here देखो क्वेश्चन नंबर 36, all of you, this question number 36 is little different. यहां पे statements you have to select from the conclusions. आपको यहां पे statement select करने हैं conclusion से. So here conclusions and then statements are given. So all of you just see from where, from which statements you can have these conclusions. Okay. देखो syllogism का concept है, statements exactly same manner में आपको statements and then you have to check that if these three statements are given, can these two be the valid conclusions? If these three statements are given, can these two be the valid conclusions? These three statements are given, can these two be the valid conclusions? Jैसे I will just draw for A. No balls are bats. तो ball bat, ball है, bat है. All pats are bats. All pats are bats. All pats are bats. Some bats are bales. Some bats are bales. Some bats are bales. तो अब bales यहाँ पे you can have bales like this. I'm just drawing one figure अभी. Conclusion: all balls, all bats are balls. Bat यहाँ, ball यहाँ पे definitely first one से ही आपको bat here, ball here. अब देखो यहाँ तो draw करने की भी जरूरत नहीं थी. No need of even drawing. अब देखो if no balls are bats given, then all bats are balls. कहाँ से conclusion हो सकता? हो ही नहीं सकता. It means this conclusion is definitely not of statement है. देखो आप कॉमन सेंस भी अप्लाई कर लिया करो. ये तो जस्ट आपको फिगर ड्रॉ करके आया, नहीं होता एक्सप्लेनिंग. डायरेक्टली लुक एट दी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. फर्स्ट स्टेटमेंट है और कंक्लूजन ऑल बैट्स आर बॉल्स, तो डेफिनेटली ये कंक्लूजन हो नहीं सकता. अब आपको कंक्लूजन डेफिनेट गिवन है, अब आपको स्टेटमेंट देखना. नाउ ऑल ऑफ यू हियर इन दिस केस, डायरेक्टली आई विल टेक ऑप्शन डी. ऑल बैट्स आर पैड्स. All bats are pets. Bats हैं, pets हैं. No bats are bales. No bats are bales. So no bats are bales, तो आपका बेल यहां पे है सपोज. All pets are balls. All pets are balls. All pets are balls. तो आपका ball अब can be like this. First it is saying all bats are balls. अब देखो now all of you remember, if all bats are pads now and all pads are balls, definitely bat will be within ball only. Bat will be within ball only. And next है some pads are not bales. Some pads are not bales. अब देखो now all of you, अब यहां ध्यान देखना, bat and bales, no bats are bales ना. तो now this bale can have any area, ये कोई भी एरिया it can have, but it cannot enter into this territory. ये बैट की टेरिटरी में एंटर नहीं कर सकता. So it means those bats which are pads will definitely not be bales. वो बेल्स होंगे ही नहीं. ये तो क्लियर है, कंफर्म है. तो डेफिनेटली देयर विल बी सम पैड्स, यानी ये जो पैड हैं, जो बैट भी हैं आपके, these pads which are bats also they can never be bales. तो आपका यस स्टेटमेंट थर्ड से आपका ये डेफिनेट कंक्लूजन आएगा. Now all of you here given 7 women P Q R S T U and we work on different floors numbered 1 to 7 not.
There's a sari of different color, blue, green, yellow, magenta, purple, red, and begin on the floor, but she does not wear either. Now all of you here, in this case, what you all can do, you can form different I'll just give you the hint here. ये simple easy question है. Calculation question is not that difficult. Question आपका simple है बड़ा. If you want, you can have floors like, आप ऐसा कर सकते हो कि you can have floors like see, I can solve directly on the board also, but then the data will be not visible to you all. Therefore, I am trying to solve it here only. अब देखो floors लिख लिए, and then I can just write down the name of the persons, P Q R S T, P Q R S T, U, V and W. So persons are P Q R S T, U, V and W. सब डिवाइड कर दो. V and W. Okay. Now here in this case, Q works on 4th floor. Q works on 4th floor. So Q on 4th floor, but she does not wear purple or magenta साड़ी. So यहाँ पे पर्पल या मेजेंटा नहीं होगा, पर्पल और मेजेंटा नहीं होगा. So here also you can cancel purple or magenta. R wears blue sari, but she does not work on 2nd or 6th floor. So 2nd and 6th floor you can cancel out, and wears blue sari. यहाँ पे blue you can just write down blue sari. So R के लिए blue sari you just write down. Okay. So एक तरह से यहाँ पे R blue also cancelled out. T works on floor 5. T works on floor 5. So T works on floor 5, and C wears a red sari. C wears a red sari. So this is red sari. The one who wears a green sari works on floor 7th. So floor 7 पे color of sari is green. Okay. S works on floor 1st. S works on floor 1st. So S is working on 1st floor. Okay. V wears a pink sari. V wears a pink sari. So here also you just write down pink sari. Okay. P does not work on 7th floor. P does not work on 7th floor. So P does not work on 7th floor. This is also cancelled out. The one who wear magenta sari works on 2nd floor. So one who wear magenta sari works on 2nd floor. So this way you can fill, and then now all of you directly you can combine. See, 1st floor, now combining all the data. Here this combining the data won't take much time. So 1st floor who is staying? S is staying. Now the 2nd floor, whom you will get? 2nd floor, the only person remaining will be what? P. Then all of you for 3rd floor you get R, and R will be wearing blue color sari. 4th floor already you know Q. 5th floor
So fifth floor, who will be there? T already you know. Sixth floor you will get V. Sixth floor you will get V. And then seventh floor, who will be there? Seventh floor, U or W? Who will be there on the seventh floor? All of you, just guess fast. When I was writing here W, I was just waiting for you all to see. There are 7 persons, there are 7th floor. कभी कभी आप लोग पता है क्या? I keep on checking how attentive you all are. P, Q, R, S, T, U and V 7 ही person है ना, तो 7 person है तो W, तो when you are watching ना, watch it sincerely. आप लोग संग यही प्रॉब्लम है, you are not observant at all. आप लोगों को बड़ा ऑब्जर्वेंट होना चाहिए. ये जो एरर है ना, दीज एरर्स आर डेलिबरेट. I was writing here, those of you, I can see many of you are watching. How you are watching that when you are not pointing out this thing कि सर यहां पे कहां है W. डियर अभी आप लोग ये मत सोचो, जब आप सिंसियर रहते हो ना तो हर जगह वो एप्टीट्यूड वो डेवलप होता है. Now here you can have U. So now all of you can just fill the color also. So this is green. So 6th floor you will get pink, and then for 4th floor, so this was, so 4th floor the only color remaining will be yellow, and the first floor the only color will become purple. आप लोग प्लीज अपनी हैबिट थोड़ा सा ना चेंज करो. आप लोग हर एक ये जो सीरियसनेस है ना अपने अंदर ले आओ. So now this chart is complete, you can answer any question. Now this chart is complete, you can answer any question based on it. So all of you can just form chart like this. ये तो simple question था. Whether you form chart in this manner or not, definitely you can complete it. Now next question is, all of you, ये probability का question है. 5 coins are tossed. Five fair coins are tossed together. Find the probability of getting at most 3 heads. At most 3 heads, यानी आपको मैक्सिमम हेड्स कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए. So 2-3 ways all of you can solve this question. Here in this case, अब देखो कभी भी ना याद रखना, सबसे इजी तरीका, you know what is the easiest way to solve this question? Here at most 3 heads. So all of you, at most 3 heads, 5 coins are tossed. 5 coins are tossed. 5 coins are tossed. So all of you, when 5 coins are tossed, what is the total number of possible outcomes? Total number of possible outcomes is 2 to the power 5, that is 32. Total number of आपको possible outcomes क्या है? 2 to the power 5, that is 32. So these are the total number of possible outcomes. These are the total number of possible outcomes. So now here in this case, all of you, अब देखो there are 2 ways of finding out. You can solve it. One is that आप फॉर्मूला अप्लाई करो और सिंपल, these are the total number of possible outcomes. अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है? Probability of getting at most 3 heads. So now all of you please remember that at most 3 heads में what will be the
outcomes which will be not favorable. 4 heads and 5 heads. कितने होंगे? 4 heads और 5 heads. Are you all getting the point? So now here in this case 4 heads or 5 heads will be only the outcomes which will be not favorable. अब देखो हमेशा याद रखना है 5 coins are tossed ना, आपको डायरेक्ट सिंपल वे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है कि 5 coins are tossed, then all 5 coins showing head, यानी head 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 head, it will be what? All of you, कितने आउटकम होंगे? Only one outcome. So 5 coins showing head, 5 coins showing head will be how many outcomes? Total 5 outcome, sorry, total 1 outcome. All the 5 coins having head, how many outcomes are there? Total 1 outcome. ये हर एक कॉइन पे आपको हेड आए, ये हमेशा याद रखना एक ही आउटकम होगा. And then 4 head, 4 coins showing head. अब देखो 4 coins showing head ना, how many outcomes will be there? अब देखो इसमें सिंपल सा बड़ा इजी वे है. These 4 head, 1 tail. This one can be tail, or 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 this one can be tail. So 5 coins हैं, one of them can be only tail. One coin can be only tail. So अब now one coin be only tail, it can be from any of these 5 coins only. So one time this one will be tail, one time this one will be tail. So now here it means in this case 4 coins head 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 tail, or second time this one be tail all head, or this one be tail remaining head. So now here in this case all of you 4, this one can be tail or this one can be tail. So how many outcomes you can get? 1 2 3 4 and 5. There are total 5 outcomes. So this is 1 outcome, this is 5 outcome, total 6 outcomes will be there which will be not favorable. So how many outcomes will be favorable? So favorable outcomes will be equal to 32 minus 6, that is 26. So probability will be equal to 26, that is favorable outcomes upon total number of outcomes. I hope it is clear to all now. ये this is one of the easiest way. अब देखो अब यहाँ पे ना जैसे अब people they apply formula also, but formula की यहाँ पे requirement ही नहीं है, no need of formula. Just you remember that all the 5 coins head will be only one case, all 5 coins tail will be always one case. यानी आउट ऑफ 32 आउटकम्स ना सिर्फ एक आउटकम होगा जिसमें सारे हेड होंगे, एक आउटकम होगा जिसमें सारे टेल होंगे. 4 हेड या 4 टेल के आउटकम्स कितने होंगे? 5 होंगे. वाई 5? बिकॉज जैसे 4 हेड्स में कभी दीज 4 हेड 1 टेल, या फिर रिमेनिंग हेड 1 टेल, रिमेनिंग हेड 1 टेल, रिमेनिंग हेड 1 टेल, रिमेनिंग हेड 1 टेल. सो कितने कॉइन्स हैं? 5 कॉइन्स हैं. तो आउट ऑफ दीज 5 कॉइन्स either this tail or this tail or this tail or this tail or this tail, यानी 5 ही आपको हो सकते हैं वेज में. 1 coin can be tail, तो रिमेनिंग 4 हेड. तो ये इजियर वे है ना. ओके, तो ऑल ऑफ यू ये कितने हो गए आपको? 5 वेज. तो 5 वेज 1 वेज 6 वेज, तो 6 कैंसिल हो गए, आपको 6 गॉन. सो आई होप इट इज क्लियर नाउ. जब आप लोग क्लियर होता है तो जस्ट कीप ऑन रेस्पॉन्डिंग ऑल्सो. ओके, आरोही नमस्ते.
LCM of three natural numbers 21, 35 and x is 315. Find how many values of x are possible. Though now we'll be increasing the speed because we have to wind up till 2 o'clock also. 2 o'clock तक wind up भी करना है. So now here three natural numbers हैं 21, 35 and x. 21, 35 and x. These three natural numbers, their LCM is given 315. LCM is given 315. This is what? 3 into 7. This is 5 into 7. LCM 315. इसको express करना in terms of prime factor. So 315 is what? 35 into 9. That is 9 into 35. That is, it is 3 into 3. That is 3 square into 5 into 7. Now all of you, if the concept of LCM is clear, how many values of x are possible, it is saying. LCM का एक ही concept है. LCM is the smallest number perfectly divisible. So LCM is the smallest number perfectly divisible. Then in that case LCM must contain all the factors which are there in the numbers. यानी 3 है, 7 है, 5 है, 7 है, तो LCM must contain 3, 5 as well as 7. अब यहां पे LCM आपका 3 square into 5 into 7. It means ये जो third number है ना, all of you, this third number will definitely contain 3 square. तभी ये 3 square होगा, क्योंकि आप क्या करते हो, अदरवाइज यहां पे 3 ones है only. Then LCM में भी 3 to the power 1 रहता. 3 square it means definitely. So all of you here LCM is 3 square into 5 into 7. So now all of you in this case this third number will definitely, x will definitely contain 3 square. So if x has definitely 3 square, क्या क्या possibility है? So if x has 3 square and then the two numbers are 21 and 35, then the LCM will be what? LCM will be 3 square into 5 into 7. Okay, so one value of x possible is 3 square. अब we know that if देखो 7 यहाँ पे भी used है, यहाँ पे भी used है. 7 is used in two places. If 7 is used in the third number also, we will consider only once. So you can have next time x as 3 square into 5. You can have the number as 3 square into 5. If number is 3 square into 5, then also 3 square into 5, 3 into 7, 5 into 7. LCM will be what? 3 square into 5 into 7. If x is 3 square into 7, all of if x is 3 square into 7, so if x is 3 square into 7, then also LCM will be what? 3 into 5, 5 into 7, 3 square into 7. LCM आपका same आएगा 3 square into 5 into 7. And all of you, अब एक और possible value of x की, that it must contain 3 square, 5 as well as 7. 3 square into 5 into 7. If the three numbers are 3 into 7, 5 into 7 and 3 square into 5 into 7, what will be their LCM? 3 square into 5 into 7. याद रखना LCM in itself can also be one of the number. जैसे 12, 18 and 36 है, तो 12, 18 and 36 LCM क्या होगा? LCM will be 36. 36 will be the smallest number perfectly divisible by 12 as well as 18 as well as 36. Is this clear? So one of the possible values of x also is 3 square into 5 into 7. Now question number 41. Now here I will give you just the hint. 1/4 of a certain journey is at the average speed for the whole journey. So average speed, all of you please remember कि average speed is always equal to total distance upon total time. Average speed कभी भी आपका ना average of the speed नहीं होता है. Average speed
क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सब इस केस में डिस्टेंस देखो, अब डिस्टेंस यू कैन एज्यूम x ऑल्सो, यू कैन एज्यूम नहीं होता है, यू कैन एज्यूम 100, बट 100 एज्यूम करने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज 1/4 एंड देन 1/3, तो 1/3 ऑफ 100 आपको क्या होगा, डिस्टेंस यू विल गेट इन पॉइंट्स। सो वन वे इज यू टेक द डिस्टेंस which is divisible by 1/4 as well as 1/3. So two ways hai. What you can do, you can take the total distance as 12x, or you can take the total distance as 120. You can take the total distance as 12x, or you can take the total distance as 120. So अब total distance अगर 12x है, so 1/3 distance will be 1/4 of the journey. So first part में 1/4 of the journey will be what, 3x, and it is covering at the speed of 40 km per hour. So how much time he will take, 3x upon 40, 1/3 of the journey, 1/3. So 12x 1/3 will be what, 4x. He is covering at the speed of 30 km per hour. So what time he will take, distance upon speed, and then third, remaining out of 12x, 3x, 4x gone, and 7x gone, remaining is 5x. So 5x distance remaining, he is covering at the speed of 50 km per hour. What time he will take, 5x upon 50. So यहाँ पे देखो, अगर 120 लोगे तो ये 30, 40 and 50 हो जाएगा सेम मैनर में. Then average speed is equal to what, total distance, that is total distance is 12x upon total time, 3x by 40 plus 4x by 30 plus 5x by 50. You solve it, you find the value of. Find the number of ways. Next question, all of you. Question number 42 is find the number of ways in which of arranging the letters of the word calendar in such a way that exactly 3 letters are present between L and D. So if exactly 3 letters are present between L and D, so अब देखो exactly 3 letters between L and D. So देखो कैलेंडर में all of you here simple calendar CALENDAR. How many letters are there? 4 letters. Exactly 3 letters रहने चाहिए between L and D. So possible क्या, L and D can occupy either first and this position, then only there will be exactly 3 letters between L and D, या फिर second and sixth, or third and seventh, or fourth and eighth. All of yes or no? So L and D can occupy, देखो L यहाँ पे, D यहाँ पे, then exactly 3 letters between them, or L here, D here, 3 letters between them, L here, D here, 3 letters between them, or L here, D here, 3 letters between them. So L and D can occupy, all of you, how many positions? So L and D can occupy how many positions? 4 positions they can occupy. अब ध्यान रखना, LD, 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 LD. So 4 positions they can occupy. अब यहाँ पे एक और कैच है, L and D ये वन वे होगा, and D and L ये अनदर वे हो गया ना, because 3 letters between D and L it is saying, L and D it is saying. So आपको सीक्वेंस फिक्स नहीं ना है. So into 2, and then remaining, how many places will be remaining?
out of 8 positions, अब ध्यान देना, out of 8 positions L and D will be occupying any 2 positions. So these any 2 positions they can occupy in how many ways? 4 into 2 ways. And अब बाकी कितने लेटर बच गए? All of you, how many letters are remaining now? 6 letters will be remaining. Now these 6 letters can be arranged in how many ways? 6 factorial upon 2 ways, क्योंकि A आपका क्या है? रिपीट हो रहा है ना. So into 6 factorial upon 2 ways. So LD they can occupy 2 seats in how many ways? 4 into 2 ways, such that there are exactly 3. And आपस में बाकी, अब देखो, the moment L and D here, अब यहाँ पे कभी C यहाँ, A यहाँ, D यहाँ, sorry, C A R, R A C, they can interchange among themselves now. So remaining 6 positions when they would be occupying, so in how many ways they can arrange? Your 6 factorial by 2. (46-47) data sufficiency test. Now this is very easy. Salary of M is 25% less than N, and expenditure of N is 25% more than M. What is the ratio of their savings? Statement first. N saving is 25% of his salary. Now all of you, if N saving is given 25% of his salary, M and N salary you know, as well as N expenditure also you know with respect to M. So definitely आपको क्या होता है? Here in this case your saving is equal to what? Salary minus expenditure. अब relation given है, as well as saving is also given with respect to salary. Then all of you, first will be what? Sufficient. First will be sufficient. Ratio of their savings. Second one, M salary is given. Now here, if M salary is only given and nothing is given about saving or expense, then second statement alone will be not sufficient. याद रखना, पहले वाले में ना रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो में कोई भी सैलरी रहे, सेम मैनर में, सेम प्रोपोर्शन में चेंजेस विल टेक प्लेस. Question number 47. Now here average height of the class decreases by 2 centimeter if we exclude the tallest person of the class whose height is 50 centimeter. And next given average height of the class increases by 3 centimeter if we exclude the shortest person of the class whose height is 44 centimeter. Now all of you, in both question, both statement first and second, now similar kind of data is given. अब ध्यान रखना, similar kind of data is given. Now all of you, when similar kind of data is given, कि एक में केस में आपको tallest person change, what will be the impact in the average, and second में shortest person change, what will be the impact in the average, that is given. But now all of you here in this case, you cannot solve it because you don't know, neither you know the average nor the number of person. देखो, एक वैल्यू पता होनी चाहिए, either you must know the average or the number of person. If you don't know the average or the number of person ना, then total के लिए there are too many different ways ना. अब ध्यान देना, जैसे for example यहाँ just concept some all of you understand. Average equals to what? Sum of all the values upon total number, sum of all the observations upon number of observations. So sum will be always equal to what? Average into number of observations. अब sum आपका, sum में change आपको given है. Now here all of you, for average and number this thing will change ना, because ये sum आपका 20 into 10 भी आपको 200 होगा, 10 into 20 will be also 200, 50 into 4 will be also 200. So in this case remember कि अब भी आपको नहीं पता, only change in the sum you know, and neither you know the average nor you know the number of person, then you cannot find out the average. Now this is very easy question.
Coded inequality question. Now different symbols are given. What is the meaning of them? P is not smaller than Q. P copyright Q means, it means P can be greater than or equal to Q. P star Q means P is not greater than Q. It means P is less than or equal to Q. P at the rate Q means P is neither greater nor smaller than Q. It means P is equal to Q. P dollar Q means P is neither smaller than nor equal to Q. It means P is greater than Q. And then P percent Q means P is neither greater than nor equal to Q. It means P is less than Q. This is the meaning of the symbols. Now with these meanings in the symbols, definitely you can find out. You can easily just P copyright Q, Q percent T, T at the rate R, R S. You just so P copyright Q, P is greater than or equal to Q. Q percent T means what? Q is less than T. T at the rate R means T is equal to R. And R asterisk S means R is less than or equal to S. R is less than or equal to S. So first है S copyright T. So S greater than or equal to T, definitely T and R, T and S. S will be definitely greater than or equal to T. Then R dollar Q means R is greater than Q. So R is greater than Q. R is equal to T and T is greater than Q. Definitely R will be greater than Q. Second is also true. First is true, second is true. If first and second true, then definitely you can mark answer option B. No need of checking C, third and fourth. Option भी देखो, time save करो. And वैसे भी Q, as you cannot find any conclusion here. Q and S you can find the conclusion because Q will be what? Less than S. But between P and S you cannot find out any conclusion. Because between P and S you cannot find out any conclusion because in between you have symbols in opposite directions. So remember, between P and S you cannot find out any conclusion. HCF of two numbers is 18. If sum of these two numbers and their LCM is 954, how many pairs of such numbers are possible? HCF of two numbers is 18. So if HCF of two numbers is 18, sum of these two numbers and their LCM is 954. देखो now all of you अब यहाँ पे ध्यान देना. If HCF of two numbers is 18 now, so 18 is the common factor. Okay, 18 is the common factor. So definitely the two numbers will be in the form of what? 18 into A and 18 into B. And यहाँ पे A and B will be what? Co-prime to each other. The two numbers X, अगर two numbers if I am taking X and Y, then X will be 18 into A, Y will be 18 into B, where A and B will be what? Co-prime to each other. A and B एक दूसरे के co-prime होंगे, क्योंकि आपस में इनके में अगर कोई common factor हुआ ना तो definitely 18 पे भी, here 18 will not be the HCF then. So now what will be their LCM then? If the two numbers are 18A and 18B, so what will be their LCM? उनका LCM क्या हो जाएगा? 18 into A into B. What is their LCM? 18 into A into B. So their LCM is 18 into A into B, because it must contain 18 also, A also, B also. Now given sum of these two numbers and their LCM, that is 18A plus 18B plus 18 into A into B. अभी याद रखना, ये 18 into A है, 18 into B है, 18 into A into B is equal to 954. You can take 18 common. So A plus B plus A into B equals to 954. So अब ये divide कर दो.
So now it becomes a plus b plus a into b equals to 5 into 3. So 53. A plus b plus a into b equals to what? 53. I hope it is clear to all now. So a plus b plus a into b equals to what? 53. So यहाँ पे all of you solve करने के there is one method, what we call it, कि expressing the number in terms of factors. Factors के form में numbers को express करना है. So all of you, what we do, we add 1 both side. We add 1 both side. ये इससे ना we can express the number in terms of factors. बड़ा easy हो जाता numbers को factors के form में express करना. So now here in this case, now this one, ये 1 plus a, अब ध्यान देना, 1 plus a plus यहाँ से b common 1 plus a equals to 54. अब ये 1 plus a plus यहाँ पे 1 plus a. So 1 plus a entire we can take common 1 plus a. So 1 plus a you take common into 1 plus b equals to 54. 1 plus a into 1 plus b equals to 54. 1 plus a into 1 plus b equals to 54. तो अब यहाँ पे 1 plus a into 1 plus b equals to 54. So what, यानी कि multiplication of two numbers equals to 54. तो अब यहाँ पे 54 को all of you, how many ways you can break it? 54 you can break it as how many ways? 1 plus a into 1 plus b equals to 54. So अब 54 है तो you can write it as 1 into 54. It means आपका एक तरह से 1 plus a अगर 1 हो गया, 1 plus b 54 हो गया. Okay. Now here, or you can write it as 2 into 27, or you can write it as 3 into 18, or you can write it as, see further can we break it in this form, 6 into 9. अब देखो, अब now all of you please याद रखना, 6 into 9, 9 into 6, you will be getting only one pair now. You will be getting only one pair. So if you are getting one pair only, 6 into 9, 9 into 6 pair 1 रहेगा, 3 into 18, 18 into 3 pair 1 रहेगा, 2 into 7, 27, 27 into 2 1 pair रहेगा. 1 into 54. अब ध्यान देना, all of you tell me, 1 into 54 is it possible? 1 into 54 means what? 1 plus a if it is equal to 1, 1 plus a if it is equal to 1, then a will be equal to what? 0. a will be equal to 0. तो यहाँ पे आपको a 0 हो जाएगा, नंबर will become 0. तो ये आपको फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. 1 plus a equals to 1, it means a will be equal to what? 0. The moment a will be equal to 0, it means ये पॉसिबल आपको नहीं हो पाएगा, because a 0 means number will be 0 ना, number will be 0. Is this thing clear or not? So ये आपको नंबर 0 होगा, तो it means what are the possibilities? How many pairs of such numbers are possible? कितने पेयर पॉसिबल हैं of such numbers? Only 3 pairs are possible. Where 1 plus a, now listen, 1 plus a if it is equal to 2, 1 plus b will be equal to what? 27. So 1 plus a equals to 2 means 1 plus a equals to 2, so a will be equal to what? 2 minus 1, 1, and b will be equal to 27 minus 1, 26. 27 minus 1, 26. यानी आपका एक नंबर क्या पॉसिबल है? नंबर पॉसिबल है x equals to 18 into 1, that is 18, and y will be what? 18 into 26.
Another number will be 18 into 26. Similarly, other pair possible, all of you, other pair. देखो pair, number of pair find out करना बड़ा easy है, just break कर दो. Then what can be the other numbers? So other number can be 1 plus a 3. Then 1 plus a is 3. Then a will be equal to 2, and then b will be equal to what? B will be equal to 17. So when a will be, other possibility is a equals to 2, b equals to 17. A equals to 2, b equals to 17, and then next possibility, a plus 1 equals to 6. So a will be equal to what? 5, and b will be equal to 8. B will be equal to 8. I hope it is clear to all now. So first वाले का तो आंसर सिंपल है. All of you, what? How many pairs we are getting? 3 pairs. Next question क्या? All of you, next question. I'll just dictate the question here, because the moment I will move this slide. What is the sum of the numbers of these pairs? Sum of the numbers of these pairs. So now all of you, sum of the numbers of these pairs. नाउ सम ऑफ द नंबर्स आपको करने हैं, तो नेक्स्ट में आपको सम ऑफ द नंबर्स क्या होते हैं? सो सम ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज पेयर्स. सो नाउ ये पेयर है आपको. व्हाट इज द पेयर? वन पेयर इज 18 and 18 into 26. One another pair will be what? 18 into 2 and 18 into 17, and then this one you have to find out. I hope it is clear to all of you now. Now अब देखो, now all of you please याद रखना, if you find out the exact number ना, sum of the numbers of these pairs, so यहाँ पे exact number आप find out करोगे. तो अभी हमने क्या देखा? 18 into 1, 18 into 26 and all. तो आपको नंबर क्या होंगे? लार्ज नंबर होंगे. सो कभी भी whenever you are getting such type of question ना, जहाँ पे आपको सम आ गया, तो it might be possible. देखो आप क्या कर सकते हो? Here in this case might be possible that they are just talking about equivalent to sum of the digits. Equivalent to sum of the digits. So just check कि sum of the digits can be equivalent to whom. यहाँ पे वैसे ये clarity रहनी चाहिए, because here this clarity is missing. In this question, question number 50, I will say that this clarity is missing. ये clarity missing है कि ये exact sum of the numbers कह रहा है, sum of the digits. Here because according to the options ना, यहाँ पे sum of the digit आएगा. Now next question number 51. The average of the ages of Rakesh and his only son Vijay exceeds the average of the ages of his wife Asa and Vijay by 40%. The age of Vijay is 30 years less than age of Asa, whose age is 20 years less than Rakesh. Find the age of Vijay in years. See, this is pure calculation based question. All of you, I don't think there is any need to solve this question. Because here you can just take the age of Rakesh and his only son, average age of the Rakesh and his only son exceeds the average age of his wife Asa and Vijay. So इसमें I'll just give you the hint. Rakesh age R, son age S, Asa age A. Then average age of Rakesh and son will be R plus S by 2. Average age of Asa and her son A plus S by 2. So this age
exceeds the average age of this one by 40%. It means you can also say this one is equal to what? Into 140%. And given the only the age of Vijay 30 years less than the age of Asha, whose age is 20 years less than the age of Rakesh. Now here this one becomes very simple. The age of Vijay is 30 years less than the age of Asha. So Asha and her son, age difference is 30 years, and that of age difference between Vijay and Rakesh, here in this case Asha and Rakesh is what? 20 years. So Asha and Rakesh के एज में डिफरेंस क्या है? 20 years है. विजय एंड आशा में एज डिफरेंस क्या है? ऑल ऑफ यू गिवन हियर 30 years. आशा की एज याद रखना. अब सिंपल से यहां पे एक कॉन्सेप्ट ले लो. आशा की एज 20 years लेस देन राकेश, एंड विजय एज इज 30 years लेस देन आशा. इट मीन्स इनके बीच टोटल डिफरेंस क्या है? 50 years. टोटल डिफरेंस क्या है? 50 years. सो यू कैन जस्ट सॉल्व इट. सो you have to find out the age na. तो age of Rakesh will be what? Age of son plus 50 years. यहाँ पे age of Asha will be what? Age of son plus 30 years. अब ये solve कर दो. You can find out. This 2 and 2 will get cancel out. तो 2s plus 50 equals to 2s plus 30 into 140%. Into 140%. Is it clear? So directly you can solve it in this manner. A boatman takes thrice as long to row a distance against the stream as to row the same distance within the stream. Find the ratio of the speed of boat in still water and the stream. Row a distance against the stream. Against the stream means upstream. So upstream speed of boat is what? Kind of x plus y. If speed of boat is x, speed of stream is y. So upstream speed is x plus y. Downstream speed is x minus y. Downstream speed is x minus y. Then all of you here in this case, boatman takes thrice as long. So here in this case, you have to find out the ratio of the speed of boat in still water and the stream now. So upstream is to downstream. What will be the ratio of the speed? Ratio of the speed is x plus y upon x minus y. And given a boatman takes thrice as long to row against a distance against the stream. Upstream इसका जो time है, all of you here in this case, time is what? Thrice that of your downstream. अब speed and time, they are inversely proportional to each other. So all of you, speed and time, they are inversely proportional to each other. So now here in this case, see, sorry, this is your downstream, this is your upstream speed. Downstream means both boat and stream are in the same direction. So actually I'm getting late. We are exceeding time. तो sometimes यही होता है. देखो एग्जामिनेशन हॉल में भी यही होता है. जब लास्ट टाइम में जब आपके पास टाइम नहीं बचता है ना, तो you are saying something, you will be saying something and then you will be doing different thing. I am saying कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड बोट एंड स्ट्रीम क्या हो जाता है? सम हो जाता है. And I am writing upstream. Same problem will happen with you also in the exam. एग्जाम में एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम होती है सबके साथ. यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब लास्ट में जब टाइम नहीं बचता ना, तो यही मेरे साथ भी हो रहा, टाइम नहीं बच रहा, तो अब क्या होता है, आप अचानक ही पैनिक मोड में आ जाते हो कि अरे अभी इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, टाइम है नहीं. एग्जाम में भी आपको यही लगेगा कि अरे इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं, अरे अभी तक तो इतने ही अटेम्प्ट हुए. तो आप क्या हो गए अचानक, आप पता क्या है, इसलिए स्टूडेंट्स एंड टाइम में देखो पता क्या है, लास्ट यू विल वोंट बिलीव 15-20 मिनट्स में ना कैलकुलेशन एरर बहुत होती हैं. OMR फिल करके आ जाते हैं रॉन्ग. स्टूडेंट्स दे फिल रॉन्ग OMR ऑल्सो, यू वोंट बिलीव. ये तक होता है
कि सही मार्क किया है लेकिन OMR फिल करने में गलती हो गई है। इसीलिए इंपॉर्टेंस है ऑल ऑफ यू, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है आपको। मैं ये क्यों परफेक्ट एग्जाम्पल है आपको कि ट्राई टू लर्न समथिंग। आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल वन वेरी इंपॉर्टेंट लेसन हियर, दैट आपका जो फर्स्ट 1 आवर होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। योर फर्स्ट 2 आवर्स का CSAT का एग्जाम है ना, फर्स्ट 1 आवर इज वेरी क्रूशियल। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि अटेम्प्ट भी आपके ज्यादा होने चाहिए, कैलकुलेशन के भी चांसेस आपके फ्रेश रहते हैं, कैलकुलेशन भी करेक्ट। बट द मोमेंट आप जैसे ही सेकेंड आवर में एंटर करते हैं, लेथार्जी भी आएगी और धीरे धीरे अब आपके ऊपर प्रेशर भी आना स्टार्ट होगा, यानी तो टाइम होता जा रहा है, डिस्कस नहीं कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जहां पे ये आएगा तो अपने आप ही आप देखोगे ना कि आपसे एरर होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ऑल ऑफ यू प्लीज, इसीलिए देयरफॉर फर्स्ट 1 आवर में इंपॉर्टेंट होता है कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके मैक्सिमम रहे। फर्स्ट नंबर ऑफ आवर्स में आपके अटेम्प्ट भी ज्यादा रहेंगे, एक्यूरेसी भी ज्यादा रहेगी। जितना आप पास में जाओगे ना, तो आप पता है क्या होगा, आपको अटेम्प्ट्स भी कम होते हैं, पैनिक मोड में एरर के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ऑल ऑफ यू, आई होप यू हैव गॉट दैट लेसन। So now all of you, if speed of boat in still water is x, if speed of stream is y, so downstream means both they are moving in the same direction. Upstream means moving against. So therefore all of you, downstream क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तभी तो फेवर करेगा, ओवरऑल स्पीड बिकम्स x प्लस वाई। अपस्ट्रीम मीन्स अगेंस्ट, तो अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई। अब ध्यान देना, the moment it is saying ना upstream, it is taking, upstream स्पीड आपकी स्लो हो गई तो टाइम भी तो आपको एक्स्ट्रा लगेगा, थ्राइस। तो इफ upstream it is taking thrice the time of downstream ना, तो डिस्टेंस आपका सेम है। So all of you please keep in mind, speed and time they are inversely proportional to each other. So now here, if upstream it will take thrice the time of downstream, then downstream upon upstream, you know what will be the ratio of the speed, 3:1. What will be the ratio of the speed, 3:1. टाइम अगर आपका है ना अप स्ट्रीम इज टू डाउन स्ट्रीम 3:1, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन अप स्ट्रीम विल बी 3:1। इसलिए आई वॉज नहीं होता कि देखे थे मैं कितना जैसे चेहरे पे भी स्ट्रेस और सब कुछ आई वॉन्टेड, और मैं बोल भी रहा था कि लेट हो रहा है ये करना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू ऑल कि यही होगा आपके साथ। मेरे चेहरे की हंसी, आपके भी चेहरे की हंसी गायब होती जाएगी जब 3:30 नहीं होता, आपको 2:30 बजे से स्टार्ट होगा, 3:30 हो गए, 4, 4:15 जैसे होने लगेंगे तो ऐसे ही चेहरा आपका हो जाएगा। वाई फॉर लास्ट 5-10 मिनट्स नहीं होता है कि आई वॉज नॉट स्माइलिंग एंड ऑल, क्यों कम स्माइल कर रहा था, यही बताने के लिए कि यही होता है एग्जाम में। Now question number 56, 57. A, B, C, D, E, F, G and H participated in tournament whose first stage is a round robin stage where each team plays with other team exactly once. Following information is known to us. A won against B, C and D. Number of matches won by A, B and D is 3 each and no other team won 3 matches. So Rin, I will try to get that, don't worry. आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पीडीएफ नहीं मिला टेस्ट पेपर का, विल ट्राई टू गेट यू ऑल, ओके। बट आई थिंक यू मस्ट बी हैविंग द एंटायर पेपर ना, आपके पास एंटायर पेपर होगा ही ऑनलाइन, दोज हु अटेम्प्टेड। नाउ ऑल दी मैचेस, नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू डायरेक्टली these type of questions, what is the approach? यहाँ पे approach आपका same है, that what we do, we just fill the chart,
that A, B, C, D, E, F, G and H, they are playing against each other. So I'll just give you the hint कैसे आप करो. Since each team is playing against each other, यानी each team will be playing, अब 8 teams हैं तो राउंड रॉबिन स्टेज में each team is playing against नहीं होना another team only once. It means each team will be playing exactly 7 matches. A is playing against, तो अब A के अगेंस्ट नहीं B C D, तो how you fill it? Now A1 against B, C and E, B, C and E, A1 against B, C and E. So आपको A जो है B, C and E against 1, तो आप देखो यहाँ पे तो ये वैलिड ही नहीं है, B, C and E के against 1, तो 1 I am just marking by correct sign and loss I will be marking by cross sign. So it means at against other teams he lost. So यहाँ पे total how many matches he would be winning? 3 matches. Or here all of you, if you want you can also say that sir, since I have read the third statement also, so therefore I am combining these statements, that here in the next one it is given number of matches won by A, B and D is 3 each. So therefore I have marked कि A won against B, C and D na, therefore against D, E, F, G and H it definitely lost. So number of matches A1 is 3, number of matches won by B and D also is 3 each and no other team. So A, B and D they are winning 3 matches each. They are winning 3 matches each. C won against B and D but lost to E. C won against B and D but lost to E. H won all the matches. H won all the matches. H won all the matches. G won against B but lost to E. G won against B but lost to E. D lost to F and C won only 2 matches. D lost to F, D lost to F and C won only 2 matches. It means rest of the matches C. Okay. Is it clear to all now? So now all of you start filling the chart now. Now how you can, A chart is complete, okay. Now all of you, C has won only 3 matches, sorry C has won only 2 matches, D has won only 3 matches. So if D has won only 3 matches, so against H definitely T has lost, against H definitely T has lost. And then all of you just start filling it. One here it will be lost and then this one will be lost.
So in this manner all of you just fill the chart. This will be 7 4 4 and this one will become 2. So from this table we are getting that D1 against, ये यहाँ पे this is all of you win. So now all of you just fill the chart, you will be getting, so I'll be just filling directly the chart here. So this will be 1 1 1 loss loss 1 loss, F will be win loss win win win, and then E will be loss loss win loss not applicable loss win loss, and finally B will be this way your chart will be completed. This way your chart will be completed. Now you can just fill. Now all of you just remember here total number of matches played. Now in this case just remember one thing, if there are 8 teams now, each team is playing exactly one match against each other, so total number of matches played will be 8 into 7 by 2, that is 28 matches. That is 28 matches. All of you sometimes यही shortcut का काम करता है कि total number of 28 matches will be played. So total number of victories will be also what? 28. So total number of victories will be 28. So 3 plus 3 plus 3, जैसे ये 9 हो गया, 9 plus 7 16, 16 plus 2 18. So how rest will be divided? This way also. So all of you directly you know there will be total 28 matches, so there will be total 28 victories only. There will be total 28 victories. So all of you just solve this set. Yes. This one is direction sense test, you can solve it. Now here I will just give you the hint. There are 2 concentric circles of circular track of radii 1000 centimeter and 1002 centimeter. So this is 10,000 centimeter and this is 10,200 centimeter. A runs on the inner track and goes 1 round on the inner track in 2 minutes 30 seconds, while B runs on the outer track in 2 seconds more than that of A. So you know ये track है, circular track. So circumference of the track is always equal to 2 pi r. So circumference of the track is 2 pi r. Now here A is completing in 2 minutes 30 seconds while B runs 2 seconds more than A. It means A is completing in 150 seconds and B is completing in 152 seconds. So now all of you here remember we have to find out who runs fastest. So always remember that ratio of the speed is what? Inversely proportional to time. So if the ratio of the time of A and B is 150 upon 152, then ratio of the speed of here in this case, but distance, are they covering the same distance? No, they are covering the different distance. This is the ratio of their time, 150 and 152. And now all of you, what will be the distance covered by A? Distance covered by A will be 2 into pi into 10,000. Distance covered by B is equal to 2 into pi into 10,200. Now all of you, now here in this case, this 2 pi cancel out. Now directly this will be the ratio. ये है आपका 75 by 76. Ratio of their distance
50 upon 51. Ratio of their time is 75 upon 76. So ratio of their distance is 50 upon 51. Ratio of their time is your 75 upon 76. Then all of you here, what will be the answer? Who runs faster? So all of you, definitely who is running faster here? C will run faster, because ratio of the distance is 50 by 51, ratio of the time is 75 by 76. So all of you, definitely who is running faster? यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ये 50 by 51 है, यहाँ 75 by 76 है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस, यहाँ पे गैप है ना, तो ये आपको सेम टाइम में इट विल बी कवरिंग मोर डिस्टेंस, बी विल बी कवरिंग मोर डिस्टेंस. Now all of you, number of handshakes. Number of handshakes is always given by NC2. Number of handshakes is always given by NC2. So NC2 is n into n minus 1 upon 2. This is equal to 91. N into n minus 1 by 2. This is equal to 91. N into n minus 1 equals to 182. So n is equal to what? 14. You get n equals to 14. And then number of gifts exchanged on the occasion of Pongal. अब देखो, अब यहाँ पे ना, now all of you direct shortcut देखना. Now here in this case, if there are 14 persons and they are exchanging gift, हर each time handshake कर रहे हैं as well as exchanging gift with other person. So total number of gift exchange will be what? N into n minus 1. So it becomes 14 into 13, that is 182. But no need of even doing this. No need of finding out. B question is specific. This question you can read the question, mark the answer. Remember, two persons whenever they meet ना, जब मिलेंगे आपस में, handshake will be only once. Handshake will be only once. But when they are exchanging gift, so how many gifts will be exchanged? दो person मिल रहे हैं. A is giving gift to B, B is giving gift to A. So two gifts are exchanged. It means in one handshake, how many gifts are exchanged? Two gifts are exchanged. So all of you, if two gifts are exchanged, then in 91 handshakes, how many gifts total will be exchanged? 91 into 2, 182. So directly you can read the question, you can mark the answer. See, now all of you, this type of question we have already covered. Here you can solve it. Graph depicting the population density and the land area of 4 villages, namely A, B, C, D. This is the population density per square kilometer given. This is the land area given. Okay. याद रखना, ये 250 है फिगर, ये 12 है, ये 6 है, यहाँ पे A क्या है? 20 है. ऑल ऑफ यू याद रखना, ये क्या है? B है, तो लैंड एरिया इज व्हाट? 6 किलोमीटर स्क्वायर. पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? 200. For C, land area is what? 8 kilometer square. Population density is 250. For D, land area is 12 kilometer square. Population density is 150. And for A, land area is 20 and population density is 150. So population density given, sex gender ratio is given. So now all of you, I think you can solve it. This one is very simple, just calculation based question, no logic here. Now all of you, these type of questions, these are again very simple questions and very common type of question. 40% of the students are boys in an aptitude test. In a school, 40% of the students are boys. So if there are suppose 100 students, so 100 students, boys and girls. So 40% of the students are boys. So 40 boys, then remaining 60 are girls. 75% of the girls scored more than 40 marks. So 75% of the girls, it means 45 girls scored more than 40 marks. If 60% of the total students scored more than 40 marks, 60% of the total students, it means total how many students scored? 60 students scored more than 40 marks.
फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज हु स्कोर्ड 40 मार्क्स और लेस। So, अब देखो टोटल 45 गर्ल्स स्कोर्ड मोर देन योर 40 मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 है, सो रिमेनिंग विल बी व्हाट 15, सो 15 बॉयज स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स, then 40 minus 15, 25 boys, all of you 25 boys scored less than 40%, 40 or less than 40 marks, so 25 is what percent of 40, so 25 upon 40 into 100%, 25 upon 40 into 100%. Now all of you, अब यहाँ पे I will give you one hint, यहाँ पे जैसे एक hint concept क्या होता है, no need of solving this question in detail, यहाँ पे simple hint है ना कि if A and B average is C ना, if C is the average of A and B, definitely C will be between A and B, C की वैल्यू A and B के बीच में ही होगी, C की वैल्यू ना आपको it lies within A and B. So now here the number of books that NIT Allahabad has is the average number of books of NIT Jaipur and NIT Delhi. So it means NIT Allahabad will be between NIT Jaipur and NIT Delhi. NIT Jaipur and NIT Delhi. NIT Jaipur and NIT Delhi के बीच में, okay. Which one is greater, which one is lesser? No need. Similarly, number of books that NIT Patna has is the average of the number of books of NIT Trichy and NIT Patna will be between NIT Trichy and NIT Bhopal, यानी डेफिनेटली एक से ग्रेटर होगा, एक से लेसर होगा. Now given NIT Trichy has more books than NIT Jaipur but not more than NIT Bhopal. NIT Trichy has more books than NIT Jaipur. अब NIT Trichy has, अब देखो अब यहाँ पे बड़ा सिंपल हो गया, NIT Trichy has more books than NIT Jaipur but not more than NIT Bhopal, यानी NIT Bhopal is more than NIT Trichy and NIT Patna will be between NIT Bhopal and NIT Trichy. So NIT Bhopal आ गया, NIT Patna and NIT Trichy, आपस में ये सीक्वेंस हो गया, NIT Bhopal, NIT Patna, NIT Trichy. Now here, अब क्या है, NIT Trichy has more books than NIT Jaipur. अब NIT Trichy जो है आपको more है than NIT Jaipur. Clear? Now last one given, at least one member has less book than NIT Jaipur. अब यहाँ पे here in this case, अब NIT जयपुर से एटलीस्ट वन मेंबर हैज लेस बुक, तो अब यहां पे अगर NIT जयपुर NIT दिल्ली से अगर मोर हो गया, सॉरी NIT जयपुर अगर NIT दिल्ली से लेस हो गया, देन हियर डेफिनेटली NIT Allahabad will also become greater than NIT Jaipur. So NIT Allahabad will also become greater than NIT Jaipur, then NIT Jaipur से कोई भी greater नहीं रहा. It means definitely here if at least one member has less book than NIT Jaipur, at least it is saying, so NIT Jaipur will be more than NIT Delhi and then NIT Allahabad will be between NIT Jaipur and NIT Delhi. So NIT Jaipur greater than NIT Allahabad greater than NIT Delhi and यहाँ पे आपको NIT Bhopal greater than NIT Trichy greater than NIT Bhopal greater than NIT Patna greater than NIT Trichy. So you just solve it. Okay. So among all जितने भी हैं सब में आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल गया, सीक्वेंस. Now all of you, this one is also pure calculation based question, you can solve it. Look, this question, if in a particular year X there are 53 Sundays, then how many Sundays will be there in the period of year X to X plus 3 years? अब देखो, if there are 53 Sundays, अगर normal year है, so all of you remember, normal year there are 365 days. 365 days means 52 complete weeks plus 1 day extra. If there are 53 Sundays हैं,
तो इट मीन्स 53 संडेज मीन्स डेफिनेटली इन अ नॉर्मल ईयर अगर 53 संडेज है ना, तो ओनली पॉसिबल व्हेन दैट ईयर योर बिगिंस विथ संडे. सो फर्स्ट डे इज संडे, लास्ट डे विल बी संडे. सो अगर ये नॉर्मल ईयर है, अब ध्यान देना, इफ दिस ईयर इज नॉर्मल ईयर, एक ईयर आपका ये नॉर्मल ईयर है, सो नॉर्मल ईयर में आपको 53 संडेज हैं. ओके, तो नेक्स्ट ईयर में आपको हाउ मेनी संडेज, कितने आपको संडे आएंगे. अगर नेक्स्ट ईयर आपको, देन फर्स्ट डे विल बी व्हाट. अब इस साल अगर फर्स्ट डे आपका हो गया था संडे, फर्स्ट डे आपका क्या हो गया था संडे, लास्ट डे आपका संडे, तो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे विल बी व्हाट मंडे. तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आपके कितने संडेज होंगे, 52 संडेज ही होंगे, बिकॉज नेक्स्ट ईयर विल बिगिन ऑन मंडे. तो आपको नेक्स्ट ईयर में भी 52 संडेज होंगे. सो नेक्स्ट ईयर विल बी, देयर विल बी हाउ मेनी संडेज. सो इफ दिस ईयर देयर आर 53 संडेज, तो आपको समझ गए, इट मीन्स दिस ईयर बिगिंस विथ संडे एंड्स विथ संडे. सो नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली संडे से बिगिन नहीं होगा. संडे से बिगिन नहीं होता है तो डेफिनेटली इफ इट बिगिंस ऑन मंडे, देन लास्ट डे विल बी मंडे. सो देयर विल बी 52 संडेज ओनली. तो 52 संडेज. ओके, उसके नेक्स्ट ईयर भी 52 संडेज ओनली, उसके नेक्स्ट ईयर भी 52 संडेज. सो टोटल नंबर ऑफ संडेज इज व्हाट 209 संडे. इफ सो इन 4 years हाउ मेनी संडेज यू गेट 209 संडेज. अब देखो, अब इस नाउ हियर इन दिस केस, ये आगे वाले ईयर इनमें से कोई लीप ईयर है तब भी 52 संडेज ही रहेंगे. इफ दिस ईयर इन विच देयर आर 53 संडेज, अगर ये लीप ईयर है तो ये तब लीप ईयर मीन्स 366 डेज. इट मीन्स 52 वीक्स प्लस 2 संडेज, 52 वीक्स प्लस 2 डेज. अब 52 वीक्स प्लस 2 डेज में ऑल ऑफ यू अगर 53 संडेज हैं, 52 वीक्स प्लस 2 डेज. नाउ इस केस में इफ देयर आर 53 संडेज, ऑल ऑफ यू अब ध्यान से सुनना, इफ देयर आर 53 संडेज, तो नाउ हियर इन दिस केस हाउ इट कैन बी पॉसिबल. इट कैन बी पॉसिबल, अब देखो, अगर फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इज सैटरडे, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इज सैटरडे, देन आपका लास्ट डे ऑफ द ईयर क्या होगा संडे. बिकॉज लीप ईयर में फर्स्ट डे एंड लास्ट डे आपको सेम नहीं होता. फर्स्ट डे एंड सेकेंड लास्ट डे विल बी सैटरडे एंड देन लास्ट डे विल बी व्हाट संडे. सो नाउ इन दिस केस देयर विल बी हाउ मेनी डेज, आपको 53, देयर विल बी हाउ मेनी 53 संडेज. सो अब आपको 53 संडेज होगा. अब नाउ हियर ऑल ऑफ यू अब ध्यान से देखना, अब जैसे ही यहां पे 53 संडेज आपका आ गया, तो अब नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे विल बी व्हाट मंडे ना. तो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे विल बी मंडे, देन डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर देयर विल बी हाउ मेनी संडेज, 52 संडेज ओनली. फिर आगे भी हमेशा आपके 52 संडेज ही आएंगे. इट मीन्स स्टिल यू विल हैव हाउ मेनी संडेज 209 संडेज. स्टिल यू विल हैव 209 संडेज. याद रखना, अब ये देखो सिंपल सा, ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए था. नाउ ऑल ऑफ यू रिमेंबर, if there are 53 Sundays या 53 Mondays ना, then in 4 years maximum they can have what 209 Sundays. Now this is very simple question of simple interest. 18,000 you divide in the ratio of 7:8 at the rate of R% R plus 5%. Total sum simple interest earned is given rupees 6360. So you can just do the calculation and calculate it. Find the last 2 digits of the series. Find the last 2 digits of the series. So now here again ये concept आपको cyclicity related है. 7 to the power 1 unit digit 7, 7 square 9, 7 cube 3, 7 to the power 4 1, then again 7 to the power 5 7. So अब यहाँ ध्यान देना, 7 to the power 1 7, 9 3 1, 7 plus 9 16 plus 3. अब देखो यूनिट डिजिट यहाँ से लेके 7 to the power 4,
7 + 9 + 3 + 1 दैट इज 20, ये 0 हो गया। सिमिलरली 7 to the power 5, 7 to the power 5, 7 to the power 5 से 7 to the power 8, यहां पे भी यूनिट डिजिट सम क्या हो जाएगा 0। 7 to the power 9, 7 to the power 12, this will also become 0। 7 to the power 13 से 7 to the power 16, this one also becomes 0। so 0 + 0 + 0 and then यहां पे आपको ये 20 20 20 हियर नहीं होता था, आपको जस्ट क्या कर रहे थे आप 0। नाउ हियर इन दिस केस 7 to the power 0, 7 to the power 0 will be what, 7 to the power anything to the power 0 is 1। so यहां से यहां तक आपका यूनिट डिजिट क्या आया था 0 आया था, एंड जैसे ही 1 करोगे तो लास्ट डिजिट विल बी व्हाट 1। तो यहां पे सिंपल क्या होगा 0 1 सिंपल इज 0 1। Now this question, sitting arrangement question, all of you can solve it, very simple, very easy question, कोई confusion नहीं है। Okay, so this one is again very simple, very easy, direct arrangement based questions, you can solve it on your own। Facing south, facing north, you just arrange। देखो याद रखना यहाँ पे facing south, facing north है, आपको 2 rows हैं, याद रखना। now all of you please keep in mind that there are 2 parallel rows containing such a way that equal distance between neighboring person, all of them are facing south, and sitting all of facing north but not necessarily in the same order। so facing north and south, all of you just remember कि आपका ऐसे है, just arrangement है that 5 person are sitting here, 5 person are sitting here, facing south, facing north, so this is south, okay, this one will be north, so facing south and facing north you can just solve it, easy question है, arrangement is very simple। The lab has decided to allow a variation in the sequence of scans of 5 fingers so that most 2 scans out of 5 are out of place। For example, if the original sequence is thumb, index finger I, middle finger M, ring finger R and little finger L, then TLMRI is also allowed but TMR LI is not। How many different sequence of scans are allowed for any given person's original scan? Sequence that at most 2 scans are out of place, 2 scans out of place हो सकते हैं, not more than 2। all of you याद रखना कि 2 out of हो सकते हैं, not more than 2। so here in this case out of 5 2, तो 5C2 आप कर लो। so now here in this case all of you 5C2 करोगे तो 5C2 you will get 10 ways, plus the original is also allowed, तो 5C2 plus 1 that is 10 plus 1 11, how allowed for any given person's original scan। so एक तो ओरिजिनल हमेशा देखो, एक इसमें स्टूडेंट्स एरर क्या करते हैं, इसमें स्टूडेंट्स ना देखते हैं कि यार 5C2 5 में से एनी 2 कैन बी रॉन्ग, सो हाउ मेनी दे आर अलाउड ना, तो 5C2 आ गया 10, सो दे मार्क आंसर 10, अरे ओरिजिनल भी तो अलाउड है ना, तो ओरिजिनल इज ऑल्सो 1। सो उसके अलावा 2 रॉन्ग, सो 2 रॉन्ग उसके अलावा क्या हो सकते हैं, तो 5C2, तो 2 रॉन्ग कितने वेज में हो सकते हैं 10, सो 10 रॉन्ग दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, plus 1 original is acceptable, so total 11। so all of you I hope, actually थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट था इसलिए बीच में नहीं होता है, because I thought that earlier we will be able to wind up in 2 hours because I had the class also, but हो नहीं पाया, so इसलिए बीच में थोड़ा सा पैनिक हुआ, but then I thought कि it's better to नहीं होता है, complete it only properly। so in बीच में जब था तो देखो एक चीज याद रखना,
फ्यू थिंग्स वर डेलिबरेट, जानबूझ के मैंने किया है, टू गिव यू इंपॉर्टेंट लेसन विच यू नीड टू लर्न। इंपॉर्टेंट लेसन है, जस्ट लर्न इट। एंड वन क्वेश्चन में था जिसमें थोड़े से कंफ्यूजन था, आई हैव टोल्ड यू ऑल दैट क्वेश्चन ऑल्सो, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहीं कोई एम्बिगिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा और टाइम रखेंगे, थोड़ा सा आराम से नहीं होता है, रिलैक्स मैनर में वी विल बी कीपिंग द एक्सप्लेनेशन, लाइव ओनली एक्सप्लेनेशन है कि आप लोग अगर अटेंड करते हो लाइव तो डेफिनेटली अच्छा है कि आप लोग डाउट्स वगैरह पूछ लिया करो, बिकॉज हियर व्हेन यू ऑल डोंट आस्क डाउट ना, तो फिर लगता ही नहीं फायदा क्या हुआ लाइव का, लाइव एंड रिकॉर्डिंग बिकम सेम थिंग, समझ गए। आई डेलिबरेटली कीप लाइव कि आप लोग कम से कम अपने जो इससे डाउट्स हो रहे हैं कुछ सॉल्व करने में, क्योंकि लाइव सेशंस में फायदा क्या होता है ना, लाइव सेशंस में स्टार्टिंग में आई डिड 1 or 2 थिंग्स रॉन्ग की चेक करने के लिए कि आप लोग रेस्पॉन्ड तो करो, तो आप लोग दोज ऑफ यू आर वॉचिंग ऑल्सो, आप ऐसे देखते हो जैसे लग रहा है कोई मैच देख रहे हो। अरे मैच जब CSAT के क्वेश्चन चल रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट करो ना, वरना फायदा क्या हुआ, वो हिस्ट्री लेक्चर नहीं ना है, सुनने से फायदा होगा। सो आई वॉज डूइंग इट डेलिबरेटली, बट देखा आप लोगों को कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो फिर डियर एक बात बताओ, लाइव इसलिए होता है कि आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो वो भी देखता रहो, इमीडिएटली सॉल्व करते रहे, बताते रहे, वरना रिकॉर्ड करके भेज देता, मेरे लिए भी और कन्वीनियंस हो जाता, आराम हो जाता, आराम से नहीं होता है, कर देते। अब लाइव आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है तो अवेल इट, ओके। सो ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट अनुभव टेस्ट भी देना, थोड़ा सा सीरियसली देना, बी मोर प्रिपेयर्ड। सो थैंक यू ऑल। मानो 5C2 क्योंकि 2 कैन बी मैक्सिमम रॉन्ग ना, देखो बाई चांस होता है कि 5C2 और 5C3 का ना न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहां पे 5C2 है। संदीप, आई विल लुक इनटू दैट मैटर, ओके।